Facebook, YouTube. Now सिर्फ लाइव शुरू कर दो. It's okay. Let's go for it. मैं उनको बुला दूँ this. So everything is fine. इस पे क्या अटैच चार्ट्स कैसे लाने हैं यार इसमें HDMI इनपुट है. हाँ वायरलेस भी है HDMI whatever you need. So here's the all charts are here, right? तो फिर HDMI लगा देते हैं. Oh, you probably don't need this monitor, do you? No. मैं कह रहा हूँ charts इधर दिखा देना. Does the laptop have HDMI output? Yeah, right here. Yeah. So and switch this to ये इधर लगाओ. HDMI input here. हाँ हाँ. और फिर उधर से उसको चेंज रिमोट कहाँ पे प्रोजेक्टर है. थोड़ा सा अगर इसका वो हो जाए क्या थोड़ा वो मैं कहता नहीं छोटा ना जूम वगैरह ठीक हो जाए कुछ. लेकिन वो फिर क्योंकि एंगल पे है इधर एवरीथिंग इज क्लियर नाउ. ठीक है इसी तरह ही आएगा. ठीक है अदरवाइज वी कैन यूज दैट ट्राइपॉड. कौन सा वो वाला लेकर ऊपर. No, don't worry about it. This is fine. It's good enough. Just gonna open up the charts. कुर्सी बीच में. Yeah, I got it. Good. Should load up now. Excellent. वो basically 10 अकाउंट आपने मैं इसका ही पास कर रहा हूँ. अभी बड़ा कोच काम होने वाला है. अब सिर्फ ऑडियो टेस्ट कर लो मेरी. वो मैं प्लेटफॉर्म पे जाके करता हूँ. Audio test. Can I get an audio test on TikTok, Facebook, Instagram? 2 minutes and everything is ready. I'm gonna go test this. सारी तीनों ऑडियो चीजें यूट्यूब देख रहा हूँ. Audio is okay on TikTok, I assume. Good. TikTok is okay too. Right. Good. Okay. Okay. मैं चार्ट्स पे बाद में आता हूँ. पहले मैं एक्सप्लेन करूँ. लाइट ऑन कर दें. पहले एक्सप्लेन कर दूँ कि हम करते क्या हैं इधर. Because you're new, right? Brand new, right? Okay. Here at Limitless, I show you how to trade, right?
you have never had an experience in trading, no problem. I can teach you everything about trading, how to easiest way to make money. And we start you with a program called futures trading. So within trading, there are many different types of trades. You can do options trading, you can do crypto trading, you can do any of that, but the best way to get into trading is futures because it's the cheapest. And the cheapest is, and you can learn it with practically very little money. If you want to learn to do trading in terms of options and stocks, you need a lot of investment. And with our program, you can pretty much learn to trade. And we have a challenge that within 90 days, you should be making $100 a day, minimum $100 a day with very little investments. There are different types of trades that we do. So trading has been like happening for the last 100 years. So this is something not new. We didn't make anything new. We just made some software that helps you understand. Any of you have trading experience? I know both of you have. You're doing the trial, you're doing the listening to videos, and you're new. No. You're doing the trial too, Yeah, right? yeah. And the videos, right? So the way our program works is basically we'll give you 14 days of trial for our software for free. So the idea is that we have 12 years of experience that we have compressed the information in 12 hours. We don't expect everybody to understand all the trading within 12 hours, but kind of gives you a basic understanding on how trading works. So basic first step is to log into your super areas and start watching the videos. Second step is our team is going to install a piece of software on your system, and then you can go ahead and start practicing. So we start with so we get you started with S&P 500. The symbol is called ES, December 23rd. So this is the futures market, number one. Why again futures? Because futures is the easiest market to get into for options, stocks, cryptos, other things. Why S&P? Because it's free to begin with. You don't have to pay anything out of the pocket to learn how to trade. Just to clarify something, trading doesn't matter which form it is, it's 100% gambling. It's 100% gambling in a sense that all you're doing whole day, because this market is open 23 hours, is you're speculating the price is gonna go up or down. That's it. You are not doing any change to any company's policies. You're not doing anything. You're buying and selling stocks. You're bidding on options. You're speculating on futures. Whether futures is gold, S&P, NASDAQ, doesn't matter. So whole day, your job is to just see if the price is gonna go up or price is gonna go down. That's it. That's all we do here. Now, if you know how to predict or how to gamble in the right direction, they give you a reward. It's like going to a casino, and if it lands on the right thing, you make money, right? So, but here's the thing. With the advanced software like ours, you don't have to feel like it's gambling, because the main difference between gambling and trading with the precise science is you shouldn't just know like, okay, you shouldn't have a gut feeling. In a gamble, the main difference is when you go to a casino, it's gonna spin, roulette is gonna spin, you're gonna say number 7 should come. If it comes, it comes. If it doesn't, it doesn't, right? So the chance is very random. Now trading is not random at all. Like it is a very brief science. Now if you go into trading without any like knowledge, it is gambling. But here we teach you how to, a little bit of a projector is on, but you can see we have very specific software that removes the gambling part, right? I come from a community that is very, they look frown upon on this, right? And of course, like if you don't know what you're doing, you can lose money instantly, right? So you have to be very, very careful on how to
kind of read the charts, how to follow the system, how to do the news, and then you take the gambling part out of it. And so we have a very good program that you can start as low as $300 a month after your 14-day program. That includes your videos, includes your PDFs, that includes the software, and then you can basically start to understand how trading works. So the first thing we get you started with is S&P 500. It's an index of US 500 companies that are traded on Chicago Mercantile Exchange. So 5 things I will tell you today. So we get you started. You're a trader, number one. The platform you're gonna use is called Ninja Trader. So that's a platform to start trading. The market you're gonna trade is S&P 500 futures. The software that you're gonna use is called Super Areas. Now you can do demo account, you can do funded account, you can do live account, and the exchange is called Chicago Mercantile Exchange, where all of this is happening. It's called CME, Chicago Mercantile Exchange is traded S&P 500 there. Now, once you learn the basics of trading, doesn't matter you trade options, stocks, cryptos, futures, doesn't matter what you're trading. Once you know how to read it, you can apply these concepts to everywhere, right? So now I'll go into directly like question and answer session. We'll do an interactive, like any questions, you can just raise your hand and I can get into this right away. Somebody asked me a question that other than Ninja platform, can they use another broker? Yes, Yeah. absolutely. Like For Oanda or yeah, you can use Meta Plus, doesn't matter. Like as you can do crypto, you can do, doesn't matter. but the software will be This software works on Ninja. You can watch your like the charts here and trade it on a different platform. That's absolutely fine. We don't mind. Meaning that, like you can just predict the price. So like I said, all you're doing whole day is predicting the price, right? So you can predict it on this particular platform, and then place a trade on anywhere else, like OctaFX, Forex.com, Interactive Brokers, CMC Markets. Doesn't matter. If you can even use this and trade with your own any broker in the world, any market. So this Ninja, how can we change from S&P 500 if we want to trade on the Forex pair like? See right here, you just have to make it. See, it says instrument right here, right? You just change. Yeah, you can turn it off if you like. See right here, it's instrument. You can go in and change it to a Forex. You can change it to a crypto. This supports 268 markets. So the idea is to be able to, just as long as what you want to trade, as long as the data is coming into your Ninja, you're fine. So you can do any markets, any whatsoever, period, right? So here we kind of get you started with, again, the idea is once you know trading, it's pretty easy in terms of. So your software predicts like for S&P, It predicts for everything. but it's like as good as on S&P and others. No, the it's good same for price, every market. all markets. 100% every market. You can do NASDAQ, you can do Russell, you can do crypto, you can do Forex, Dow Jones, doesn't matter. You can do individual stocks as well. It will predict it, and you just need to know how to use the software to pick your trade entry. The way normally what does a trader do? So in order to kind of understand it, I'll come this way, that way you can all see me. Excuse me. A normal trader, generally without this tool, again, we didn't make this, we didn't make any new concepts. All of this is available already online. You can go on tradingview.com. You can start plotting your own lines. You can start plotting your own support, resistance, higher high, higher lows. You can do it all. It just takes up too much energy. It just takes up too much time, right? Right now on this piece of software is 15 to 16 different things happening any given time for you. You have the trend, you have the strength, you have momentum, you have Bollinger Bands, strength, overbought, oversold, divergent,
retrace diversion. So everything, all we did, just like I keep giving this example is, again, Elon Musk did not make a car. All he did was he just took that software, he understood it, and then he applied the principles, and then he made everything from with an AI. Same thing we did. We didn't invent any of these concepts. We don't take any of the credits. What we did was, you go on tradingview.com, you start plotting, you start drawing your lines, and then all your energy and time is wasted in just calculating the entry point. So where do we take an entry on a trade? So that's what we come in and we say, hi guys, for 300 bucks a month, let us do the hard work. Let the software do the hard work, and you just pick the time to enter. So your job just becomes watching the chart whole day and just say, all right, this is the perfect point, and the software will suggest you 100% every day. So there are like 7 different types of trades that we can do. For example, we can do a trend trade, we can do an overbought oversold trade, we can do a divergent trade, a gap trade. So all of this is included. You just have to know how to read the chart, and that's it, right? So and right now the best way to do this, the best way is, you guys should not invest your own money. There are a lot of companies out there such as Apex, Trading Plus, so many. They give you for like $20-$30 a month, they give you a platform where you can practice. So before you start going and investing your own money, you should pass their exam, right? So for right now, I think the promotion last week was like 30 bucks a month, and now $15 to sign up and 30 bucks a month after a month. So it gives you so many benefits. So before you start going into live account, get into like a funded account first, right? So the best one we recommend is called Apex, APEX, and that they give you so many benefits. The benefit is they give you free data on 6 markets: Dow Jones, Russell, Nasdaq, gold, crude oil, S&P. And then they give you number 2, Ninja becomes free. Number 3, the best part is, if you can show them that you can make $1,500 in 1 month, they'll really give you the money, right? Who gives you out there? So what they will give you is up to $2,500 in your account, that, hey, can you prove it that you can make money, right? So this gives you the best way to get into trading without getting your own money involved, right? So think about it. It's like before you getting onto highway and start with your own car, you can lease somebody's car, right? And they say, all right, you passed this exam, excuse me. And then once you pass the exam, you can, they'll give you the car. And as long as you don't have an accident with that car, you're fine, right? So Apex funding is the best way to get into trading for futures, and the easiest way to make money. It'll give you so many it'll teach you discipline. It'll teach you not to do position trading. It will show you how not to greed, right? So the rules are very strict. And once you can pass an Apex, and we have a challenge, right? Right now, I try to lead with example. I bought 20 accounts, right? And all I have, I'm on a bit of advanced level. I can push a trade on 1 account. All my 20 accounts will pass. So most of my guys can pass in first attempt, as long as they're not greedy. So they want you to make a $1,500 in first 1 month. And if you're able to make that, they'll really give you an account, and they will pay you because they want to weed out all the bad traders. Because what happens is, once they know you're capable, they copy your trades, right? Oh, this guy knows what he's doing. So then they will give you like 90% of the winning trades. So if you make $100, 90 bucks is truly. And last month they paid out $3 million or $7 million if you go on Apex website. So why don't you guys get into Apex trading and take advantage of that? And this only first month is free, or? No, it's a 14-day trial is free. Yeah. And then I think the first month is $15. And then after that is $30, right, per month. No, but you have to prove in the first month.
No, no, you know how you can keep proving. Like it just resets, right? Okay. So what happens is you have to just make sure you trade for 7 days, and within that, I don't have COVID. I just have cough from the last 2 days, so I just ask everybody to put a mask on. So that's it. So for me, it's a bit of difficult to talk with the mask on, so I took it off. But any questions, I can answer, no problem. So I can even go in and I can show you what type of trades are out there. And so, अगर आप study कर रहे हैं तो पहले आप videos complete करें, 5 की 5, उसके बाद फिर install करें, उसको देखें market के साथ. The best time to trade is between 9 to 11 in the morning, and the next best time is 2 to 4. If you want to do evening time, do Nasdaq. Nasdaq moves best in the evening, and you should do we have different charts. 30-20 chart works best for Nasdaq after 6 p.m. And if you wanna, so I think nobody should have any issue with passing an exam, right? Anytime, like everybody should pass the exam. I start getting texts that the only rule is this: you have to trade at least 7 days, number one. And the second, you have to make $1,500 in that first month of 7 days. But only people get trapped. It's called the trailing threshold. That's, you can read the YouTube videos on it. What they ask you to do is, let's say if you were up $150 in any trade, right? And you don't close that trade and the price goes back to $50, you're still making money, but they're gonna penalize you $100. That's the only bad part about this thing is they said, hey, you got greedy and you were thinking this will go higher and higher and higher. It doesn't, right? So that's why they want you to make sure the threshold now becomes from 1,500 to minus, it becomes 1,400. So you will lose $100 right here. So the threshold is a key problem, right? So you have to make sure you go take your 2 points, 1 point, 3 points, and exit the trade. So as long as you can keep within it, our software says take 2 points, no problem. That's it, right? Divergent 2 points, midband 2 points, overbought, oversold 2 points. If you guys can make anywhere from $100 to $200 a day, this exam is a joke, right? It's like, like we give you all the tools to get this exam going. Only reason you will lose is greed. Trust me, everybody loses on greed. I was speaking to one person, he bought a $250,000 account. Good friend of mine, dating back all the way to college from 1997, right, with me. And he made $2,200 yesterday, and then he put another trade. Stupid guy. And lost almost $1,200, right? So still went in a profit, but no need, right? Once you met your target, close the computer, man. Go home, do something else with your life. So yeah, right now the Apex is at 70% off. So they were giving for 90%. Now it's at 70%, but still better deal, right? Because right now, if you were to go live today, you have to pay $100 US per month on your Ninja. You have to pay almost 20 bucks a month for your data. So that's $120 a month regardless of anything, right? So if you're doing 120, if you still can get your Apex for like 70, it's still a cheaper deal, right? And they run these promotions all the time. It's not like something that it's gonna go away and you don't run this promotion, right? So you can take an advantage of this, no problem. 70% off is still a good number, right? So instead of 30, you're paying like what, $60 a month or $50 a month, right? So still, it's cheaper way to learn how to trade. You mentioned there's 7 different types of trades you can do. Yes, For beginners, is there anything which they start with? beginners, आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया? हो गया. अभी अगर आप जो 30-20 वाला चार्ट देखेंगे ना, तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ. Yeah, Zaki, you can turn the light off. Okay. आसान तरीका सबसे ये है जी. This is
चार्ट के ऊपर लिखा हुआ 30-20, राइट? जब ब्लैक कैंडल फॉर्म हो जाए ना, अच्छा इसका ऐसा 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड्स में आपको बताऊंगा। जी जी। पहला ट्रेड हम इसको कहते हैं ब्लैक कैंडल टू ब्लैक कैंडल, राइट? सो ब्लैक कैंडल टू ब्लैक कैंडल इज द ट्रेड. You can do this on 15-10 or 30-20, but best way to do it is on 30-20. जहां आपको ब्लैक कैंडल के बाद आपका वाइट डॉट आए ना, बाइंग शुरू कर दें, एंड दैट्स इट. 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड कलर. अगर बैकग्राउंड रेड है या ग्रीन है, डजंट मैटर, इसमें आपने कैंडल टू कैंडल जाना है. तो आपने ब्लैक कैंडल देखी, वाइट डॉट देखा, आपने 1 2 3 पॉइंट्स यहाँ से निकाल दिए. आपने ब्लैक कैंडल देखी, यहाँ देखा, ब्लैक डॉट देखा, यहाँ से सेलिंग शुरू कर दी, regardless of the trend. So you can go candle to candle. So लेकिन ये वाला आपने लेना है 30-20 में, मीनिंग कि कैंडल लग गई है. हमारे सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा, बहुत सबसे पावरफुल जो चीज़ है, उसको हम कहते हैं ये ब्लैक कैंडल. यहाँ वाइट डॉट लग जाए, बाइंग शुरू कर दें. अपने सिम में ट्राई करें ना, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, यहाँ पर ब्लैक कैंडल लग गई और ब्लैक डॉट शुरू हो गया, सेलिंग शुरू कर दें. 1 2 3 4 पॉइंट निकाल लें. एंड ऑफ द डे सी 1 पॉइंट इज $50, राइट? एंड यू वांट टू व्हाट दैट 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स. 2 पॉइंट इधर निकाल ले, 2 इधर निकाल लिए, 2 इधर निकाले, 2 तो हर दफ़ा आप जाते जाते 2 पॉइंट उठा लो. वहाँ ग्रेड नहीं करनी. $100 नज़र आया, क्लोज द ट्रेड. यहाँ $100 नज़र आया, क्लोज द ट्रेड. यहाँ $100 नज़र आया, क्लोज द ट्रेड, राइट? सो idea. So number one type of trade that we tell everybody is called black candle trade. क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर का 100% confirmation है, ब्लैक कैंडल आए, ट्रेंड ही चेंज होगा. आई मीन प्राइस अब उस डायरेक्शन में चल पड़ेगी. सो नंबर 1 इज ब्लैक कैंडल. सो ब्लैक कैंडल जो है ना, सबसे आसान way to get into. Number 2 is called trend trade. Trend trade happens only on 15-10. ये वाला ट्रेंड ट्रेड कहलाएगा. ट्रेंड ट्रेड इस तरह होगा कि आपने सिर्फ देखना है, फॉर एग्जांपल, कि आपका बैकग्राउंड कलर रेड है इधर और इधर रेड है. सो अच्छा, हर ट्रेड के अंदर ना आपको पता होना चाहिए कि आपका लॉस हो सकता है. तो इस वाले ट्रेड में सिर्फ आपने स्टॉप लॉस रखना है ट्रेंड ट्रेड के अंदर, कि बैकग्राउंड कलर हेयर अगर आपने घुसना है 15-10 आपकी एंट्री कराएगी. लाइक बाय द वे, somebody wrote a very beautiful PDF. I can forward you to all. कि हमारे वन स्टूडेंट ने लिखा था 7 के 7 ट्रेड. मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ कि what type of trades are there. So number 1 black candle trade, number 2 trend trade, number 3 overbought, oversold, night session trade, divergent trade. So I can explain you, no problem. अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी बार कहती है go with the trend trade. ट्रेंड ट्रेड क्या है? आपने एंटर करना है मिड ऑफ द लाइन, मिड लाइन से. तो ऊपर एक ब्लैक लाइन 2 जा रही है, नीचे ब्लैक लाइन 2 जा रही है. आपने अगर सेल करना है तो इस प्राइस से करना है. तो वेट फॉर द प्राइस टू कम टू द मिड लाइन. So the trend trade happens on 15-10 chart. So the chart is written up there. So 15-10 के chart से आप देख लें. And all of these trades you should try, right? Over and over and over. Try करें और देखें. So उसका रूल क्या है ट्रेंड ट्रेड का? दोनों बड़े 15-10 और 30-20 पे both of the your should be same color. So if this is bearish, this must be bearish. So as long as छोटे टाइम फ्रेम में and बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड सेम हो. There's a lot of people who ask what's the difference between 15-10 and 30-20. So Okay. can you explain? It's just the candle size. So the candle size is $125 and candle size here is $250. So It's all squeeze. it's basically double the time. So squeezed in and So squeezed out. if 30-20 is 15-10 times 2, 15 times 2 is 30, 10 times 2 is 20. So 15-10, if you put 2 of these charts together on top of each other, it'll make one of these. Okay. So basically the idea is you just want to see
what is happening on smaller time frame versus what is happening on a bigger time frame, right? So आपका ये वाला trend trade क्या है? 30-20 would be slower than. Oh, much slower, very very slow. So trend trade you have to take it from a midline of 15-10. Then we have something called overbought oversold trade. सर जी जी. आपने बताया इसके अंदर पहले आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है। अच्छा स्टॉप लॉस कहाँ से लगाना है? 3 पॉइंट का. लाइट ऑन कर दो शेर. So 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है. You have to put a 3 point stop loss on a trend trade. और इवन लाइक अगर आपने लॉन्ग किया है शॉर्ट शायद है तो अगर आपने लॉन्ग किया है तो नीचे साइड पे, क्योंकि प्रेडिक्शन क्या हो रही है? लॉन्ग की प्रेडिक्शन होती है प्राइस शुड गो अप, शॉर्ट की प्रेडिक्शन होती है प्राइस शुड गो डाउन. सो आपकी फेवर में. तो अगर आपने लॉन्ग किया है तो आप शॉर्ट वाली सेल वाली साइड पे 3 पॉइंट लगा दोगे. और अगर आपने लॉन्ग किया है तो अगर सॉरी शॉर्ट किया है तो शॉर्ट क्या होता है कि here is the top, right? So this is the top. Like okay. So you have a buy, you have a sell. ये आपकी येलो प्राइस चल रही होती है, ठीक है? अगर आपने लॉन्ग किया है, right? तो what you're telling the broker that okay the price is 4500 right now, for example. आप कहते हो लॉन्ग की पोजीशन में कि I'm gonna buy right here and I want the price to go up, right? तो आपकी इंश्योरेंस इसके अगेंस्ट है ना. So right here you will say okay सिर्फ 3 पॉइंट नीचे इसके. So 4500 तो बहुत अलग से 45 को 3 इजी कर देता हूँ. 3 यहाँ पर आप 4500 पे जाके अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे कि मेरी प्राइस अगर 3 पॉइंट नीचे आ गई ना so I will close my trade. So every trend trade you have to exercise stop loss, otherwise तो आप मर जाएंगे. एंड शॉर्ट यू डू द या अगर आपने शॉर्ट करना है so अगर इस तरह सेल और बाय तो आपकी ये प्राइस है. अब ये आपकी चल रही है 4503 और आपने यहाँ से सेल लिया है तो आपने बाय पे 4506 पे लगाना है कि आपने दूसरी साइड पे. मोस्ट पीपल अगेन गेट कंफ्यूज विद डॉम कि डॉम में वो गलत क्लिक कर जाते हैं. स्टॉप लॉस लगता है आपका सेंटर क्लिक से. You have to have a mouse. You can't do it without a mouse, by the way. क्योंकि generally आप center click कैसे exercise करोगे, right? So stop loss you have to do it in that sense, right? So you so that's it. So as long as you know your trade, because ये वाला trade ना सबसे तेज आ रहा होता है. अब overbought, oversold, diversion, rest of the safe trade come slow. थोड़ी देर बाद आ रही होती है. लेकिन आपका जो है trend trade is coming every 10 minutes, 15 minutes, right? लेकिन I don't care what type of trade. हर ट्रेड में ना कोई पूरे दिन की ट्रेडिंग में गोल से चले. आपका गोल क्या है? आपने $100 कमाने हैं, आपने 50 कमाने हैं, आपने 20 कमाने हैं, आपने 1000 कमाने हैं. please pick a target. अब as long as कि आपका टारगेट पूरा हो जाए आप लोग इसको छोड़ दो. मतलब most people out there have a target of $100 a day. That's a reasonable target. So that's how we should say कि आपका ना reasonable target होना चाहिए $100 $200 a day. और honestly जिसमें again आपको पैसे कमाने आसान है, पैसे रखने जेब में बहुत मुश्किल. फौरन आपके जाएंगे क्योंकि ख्वाहिश होगी ना कि भाई मैंने ट्रेड कर लिया है, 200 कमा लिए हैं, what do I do next, right? So अब मैं आपको अगला ट्रेड बता देता हूँ. अगला ट्रेड होता है कि जब आपका देखिए इधर लाइट बंद करिए एक सेकंड. This trade works with 30-20 का चार्ट है. So now you guys know candle trade, black candle to black candle, 30-20. You guys know trend trade from 15-10 के chart पे, and then using the 30-20 chart, it's called overbought and oversold. If you want to be 100% sure that you guys don't want to lose money, wait for this number to become 100. आपके यहाँ लिखा होगा जब लाइन ऊपर जा रही होगी ना या यहाँ पर
99.99 हो जाए या 0 हो जाए तो अगेंस्ट द ट्रेंड डाल दें ट्रेड। यहाँ से प्राइस हम गिर जाती है 5-6-10 पॉइंट। अच्छा यहाँ 100 आ जाए और एज लॉन्ग एज आपकी बार ऊपर हो तो आपको 4-5 पॉइंट्स मुफ्त के मिल जाएंगे, और नीचे आ जाए 0 आ जाए, मतलब ये एग्जैक्टली 4339 100 पे आके ड्रैग हो रही थी फ्राइडे मॉर्निंग को, फ्राइडे को गिरती चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई, एंड देन लेट मी शो राइट हियर, इसको मैं ना इधर करता हूँ आपको ना एग्जैक्टली पता लग जाए कि फ्राइडे को कितना। Around 11 o'clock. ओ या सर ये देखें कितनी देर चली है, लाइक यहाँ से चलनी शुरू हो गई है, यहाँ पर 11:28 से और सुपर गई है ऑल द वे फॉर एग्जांपल 12:01 तक गई है, पूरे हाफ एन आवर it kept dragging. So let's see what happened. The price said, let's say you entered at 98, here it is 100. So even at this price, even at 11:43 at 100, that position would be right here, right? It just kept dragging. But here you have to have a strong enough heart to hold it, right? कि अगर आपने उसको देखना है कि वो drag हो रही है, try to come down here, did it all the way dragged. How many points it dragged? So it from 24 went up to like 40 points. So before you made any money, you were negative a lot of like points, right? So यहाँ पर आपने आपके जो areas आ जाते हैं ना, वो काम आ जाते हैं कि meaning कि आपके अगर every morning you guys get areas from us, from the AI, those are reversal points. So look at the Friday morning areas कि कहाँ से price ने reverse करना है, because if you had entered it right here and 99 point, even at a 99.9, even at 100, it went against you solid let me see, you at this point again 24 to 40, so like almost 15 points against, 15 times 50 आपका तो सारा account ही इस दौरान खाली हो सकता है, right? So you have to make sure that you guys observe this कि मेरा stop loss कितना होगा, वो गिरेगी like अगर 61 points it went in one direction, so we knew it's gonna come any point, any time ये गिर जाएगी, any time गिरेगी, लेकिन against right here it went against you almost 15 points from even entering at 100, right? So you have to make sure that let's say you went down आपने यहाँ पर आपने enter किया है 100 पे, right? And goes against you, only it gave you break even point. Take a look, यहाँ पर आप enter हुए हो, आपने 100 देखा है और आपने कहा है, लेकिन मुझे आपने area से confirm करना है कि areas आपके क्या कह रहे हैं. So just confirm with your area. If it went against you 15 points, it came down 15 points, you only got out at a 0 profit, 0 loss. So generally at 100 मारेगी नहीं आपको, like as long as कि आपके account के अंदर enough पैसे हैं, because look at this point and this point is a 0 profit, 0 loss. So when you're going against the trend, wait to make sure it gets to 100. This is a very rare case that it would drag on for this long, but it can happen, right? No problem. Just have to make sure कि आपके you check with your areas कि मेरे areas कहाँ पर आ रहे हैं. So this is called the overbought oversold line. So some people they would hold, ठीक है hold कर रहे हैं, यहाँ से आई, but you have to understand one thing. It does not just go in one direction like this, right? So it would go here, come down, थोड़ा सा नीचे आए, अब यहाँ से किसी ने enter किया 100 पे, right? यहाँ तक आते आते already उसको almost ये क्या price है? So मैं सिर्फ यहाँ बता रहा हूँ कि you were so perfectly righty and you entered at 100, right? And you would have gotten out right here. So you entered at what price? At 11:43, you saw that this is 100% maxed out and I can get in. So I did a sell trade right here, right?
you had an opportunity already after just 2 minutes or 1 minute, and so you entered at what price? You would have entered at 24, and you got out at 20. That's 4 points, right? तो इसको ले ले, like आप rather wait, अगर आप यहाँ exit नहीं ना हुए तो इसका मतलब है कि ये आपकी greed है, क्योंकि ऐसे नहीं हुआ कि वो प्राइस रुकी नहीं, अब उसने यहाँ पर भी आपको एग्जिट का अपॉर्चुनिटी दी। अब आपने पूरी रिट्रेस तो नहीं लेनी ना, अगर आप यहाँ पर एंटर हो गए थे और प्राइस नीचे आ गई थी, जिससे पूरा एक लाइन $250 की है यार, तो आपने 2 पॉइंट लेने हैं। आप एंटर हुए 100 पे 100% पे, तो 2 पॉइंट ले लो यार, 2 पॉइंट ले लो, इट्स ओके। तो you guys follow what I'm saying, right? That it's not gonna happen that you entered at 100 और आपके against all the time 25 पॉइंट भी चले गए और आप कहोगे यार मेरा क्या हो गया। If you entered at 100, it gave you one opportunity here and one opportunity. See, the price went up, came down, went up, came down, went up, came down. So many times within these bars, you had an opportunity to make $100, $50, $100, $50. What I do is normally I would enter at 100 here, exit here. फिर चढ़ गई है, फिर मैं enter हो जाऊंगा, फिर नीचे बार की आ गई, exit हो जाऊंगा, फिर चढ़, like from here to here, these would have been like 4 trades for me. कि भाई यहाँ पर 100 है, अभी टूट ही नहीं रही, जैसे यहाँ मुझे लगा कि यहाँ पर इसने आके टूट जाना है, make that 2, 3, 4 points, close the trade, वापस चल गई है, no problem, just keep entering and keep taking over and over 3, 4 times the trade. लेकिन generally one is enough. एक trade ले लो, देखिए you can turn the light on, no problem. So एक trade ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, अपने 2 पॉइंट का टारगेट होता है यार हमारा हर ट्रेड के अंदर। ओवरबॉट ओवरसोल्ड में 2 पॉइंट है, डाइवर्जन में 2 पॉइंट है, ट्रेड में 2 पॉइंट्स है। So it's ओवरबॉट ओवरसोल्ड ये इसको ओवर, जब ये वाली लाइन आपकी 100 पे आ गई, 30-20 पे, और नीचे वाली लाइन 0 पे आ गई, तो अगेंस्ट द ट्रेंड डाल दें। लेकिन मेक श्योर आपका बार बिल्कुल नीचे हो, आपकी जो वाइट प्राइस लाइन होती है ना, वो 100 पे, अगर ओवरबॉट है तो ऊपर वाले पे टॉप पे हो, और नीचे हो तो वो वाइट लाइन बिल्कुल बॉटम पे हो, राइट? सो स्टॉप लॉस इस पे लगा, इसमें स्टॉप लॉस नहीं होता, जनरली आपने हिट एंड रन करना है, 2 पॉइंट लेने और बाय मार्केट ऑर्डर उठाएं और दैट्स इट, या मार्केट से थोड़ा सा नीचे लगा लें। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर हम ओवरबॉट के अंदर भी ब्लैक कैंडल का वेट करें? नहीं, ओवरबॉट में आप कर सकते हो, लेकिन फिर आप दूसरे प्राइस रिवर्सल जैसे शुरू हो सकती है, वहाँ पे ले लें, वो ब्लैक कैंडल वाला ट्रेड बन जाता है। ये आपकी प्राइस रिवर्सल शुरू हुई है, ब्लैक कैंडल लग गई है, 2 ओवरबॉट के बाद भी तो यहाँ पर भी तो ब्लैक कैंडल लगी है ना, जब ब्लैक कैंडल ओवरबॉट पर लग गई तो आप नीचे आ जाओ, नो प्रॉब्लम। कि अगर हम उसके ट्रेल के रिस्क हाँ कि हमें उसको उसके फर्दर ट्रेल करना है कि नहीं करना, अगर उसने पूरा आधा घंटा ट्रेल किया प्राइस ने, हाँ, तो शुड वी वेट फॉर लाइक अ ब्लैक कैंडल? yes वी yes गोना गो फॉर द 100%? एग्जैक्टली। अब देखिए ना, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ सेफ खेलना था, देखिए एक बार लाइट बंद करें, okay, what he was saying is you don't want to take any risk at all, because if you entered here and it trails up there, right? अब देखिए आपको ये पता लग गया कि 60 points का every reversal on a huge swing generally has to come back 35%। ये हमारी एवरेज निकलती है कि एक जो स्विंग है ना, इतनी बड़ी स्विंग हो गई है, वो तकरीबन 35% बैक आ जाती है, राइट? कितने पॉइंट का स्विंग आया? 61 पॉइंट गई है एक डायरेक्शन में, तो आपको पता था कि इसने वापस तो आना है, you knew it, right? What he was saying, he would enter right here, that's it, take your 2, 3, 4 points here, ब्लैक कैंडल लग गई है, रिवर्सल आ गया है, रीट्रेस शुरू हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, लाइक 2-3 पॉइंट इधर उठा लो यार, लाइक तो इट्स सेफ। कंफर्मेशन तो है ही है कि हाँ, एग्जैक्टली। just go to the black candle then enter it. So if you are not comfortable entering here,
नो प्रॉब्लम, इफ यू फील कि यार ये इसने कितना लंबा ट्रेल करना है, 61 पॉइंट्स की ये चली गई है, सो वेट फॉर दिस डॉट एंड स्टार्ट सेलिंग, कि अब मेरा रिट्रेस शुरू हो गया है, और ये रिट्रेस अगर 61 पॉइंट का 50% होगा 30 पॉइंट्स, राइट, और 35% होगा एटलीस्ट लाइक 20 पॉइंट्स, राइट, कितनी बड़ी इसने आपको दी है, और रिवर्सल की परसेंटेज है वो फ्रॉम टॉप शुरू हो गए। हाँ जी, from right, so it gave you back 16 points, right? I have a question. Yes, If you are trading on 30-20 and looking just at the black candle, yes. and where do we put the stop loss in? Stop loss here? We don't use stop No, loss. no, here we don't because really. 3 points is nothing in that black candle. कुछ भी नहीं है ना, तो आपको स्टॉप लॉस की जरूरत पड़नी नहीं। यस यस। सर अगर हम यही चार्ट जो भी यूज कर रहे हैं, अगर हम इसको ट्रेंड ट्रेड में करना चाहें, राइट, यार फिर आपने मिड बैंड से लेना है। जी जी वही मैं कह हाँ रहा हाँ, हूँ। वो देखिए प्रॉब्लम सिर्फ ये है 30-20 मिड बैंड बहुत देर बाद आता है, आप 4-4 घंटे बैठे रहोगे। But वो 15 में हम करेंगे। 15-10 में ट्रेंड ट्रेड 15-10 में करना है, जी, जी। क्योंकि वो मिड बैंड जल्दी जल्दी आ जाएगा, राइट। Okay. लेकिन यहाँ पर भी आप करो तो आप देखो, अगर यहाँ पर आप कहते हो यार कि मैं पहली रिवर्सल में लूंगा, ये आपका मिड बैंड आया ना, जी जी। तो इट लाइक you started watching at 12:35, it came at 2:10, right? So people who trade on 30-20 takes better, बहुत long है, तो आपने ट्रेड करना है तो 15-10 में करें। Because I had experience, right? जब मैं कर रहा था, so I had experience with 15-10, so I put a stop loss, I mean वो mid band से किया, and then it goes all the way up, and then because I know it, कि वो जब वो two black lines पे जाए, it has to come down. Yeah, of course. So उससे पहले ही मैं close कर दिया trade. ठीक है, that's fine. Right. Or trail it, right? So there's a stop loss, you can trail it. If the trade goes with your, क्योंकि जो हम trend trade कहते हैं, वो हम ये कहते हैं कि मेरे पास ATM strategy है, वो I can send you the email. It's very powerful. What I wanted to do is कि I said कि मेरा DOM दिखाता हूँ. So in your DOM, right here, it's called ATM right here, right? In a trend trade, you can go down here and you can write a custom strategy. So the way it would work is, I like to do it कि मैंने यहाँ से buy करना और sell करना है, तो वो auto stop loss लगा देगी 12 ticks का, ठीक है, लगा दिया। फिर मैंने आगे एक और लगाता हूँ कि मुझे अगर मेरी direction में चल पड़ी ऊपर, I said कि एक point मुझे profit हो जाए ना, तो मेरा stop loss break even पे ले आना, ठीक है, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा उस ट्रेड में, ज़्यादा कमीशन ही जाएगा ना। तो 12 से स्टार्ट हुआ नेगेटिव कि मैंने यार मिड बैंड से उठाना है, और मैंने यहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया, वो प्राइस आई, उसने मुझे पिक किया, वहाँ एक पॉइंट ऊपर चली गई, ठीक है, मैंने फटाफट ऑटोमेटिकली अपना स्टॉप लॉस 0 पे कर दिया। When I'm at 0, all my risk is gone, सिर्फ कमीशन की स्ट्रेस है। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रही है, वो पीछे पीछे फॉलो कर रहा है एक एक पॉइंट। प्राइस गोज अप 2 points, आई एम लॉकिंग $50. प्राइस गोज अप 150, आई लॉक्ड $100, राइट। so many times I've done that in a case कि अगर मैं मिड बैंड से कर रहा हूँ, just keep locking your profit until it just no more longer goes up. So you can do through this. yes, right here, through this. Manually नहीं करना. मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आप सब कुछ ऑटोमेट कर देना उसका, तो it's called the trailing profit. जैसे अभी हम ट्रेंड ट्रेड में हैं, right? Yes, Let's say कि वो green पे जा रहे थे, right? ठीक है, So मैं उससे, let's say अगर मैं नहीं होता, वो black सा EMU is gonna come down. yes, And जो large triggers होती हैं, right? Yes, वो yes. already से पहले navigate कर देती हैं कि they're squeezing, right? Yes. The trend is going to change. may change, exactly. May change. Okay. So मैं यही कह रहा हूँ, अगर फॉर एग्जांपल आपने ये वाला ट्रेंड ट्रेड लिया, ठीक है, आपने ये प्राइस नीचे आई, ये इसने आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, ठीक है, इट स्टार्टेड गोइंग अप, द मोमेंट इट वाज हियर, माय स्टॉप लॉस वुड हैव कम हियर, एंड देन एज इट्स गोइंग अप, out of the 6 points I should have gotten 4 points, 3 points right here. So एक ही ट्रेड से आपका सारा काम निकल जाता है, right? See. Now coming to a trade
अगर आप पूरा दिन कोई ट्रेड ना लें, it's called divergent trade, diversion trade. Whole day, I'm passing my exam on Apex on just one type of trade. It's called diversion. It happens on 30-20. It happens on 15-10. If you can just spot a diversion, you don't have to take any other type of trade. मेरी फेवरेट होती है 30-20 की डाइवर्जन. मैं डाइवर्जन ट्रेड आपको दिखा देता हूँ, इतनी खूबसूरत चलती है. So let me see, on Friday there was a diversion trade and so many people let me see. Okay, बहुत आसान है. 9:25 पे it made this number 42.74, right? So 9:25, I just look at diversion on 30-20 by the way, because it's the strong. यानी कि आप कहते हो मैंने इस बिजनेस में आना, मैंने ₹1 लूज नहीं करना, ऐसी की तैसी, ना मैंने ओवरबॉट पे रिस्क लेना है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाना, ना मैंने ओवरसोल्ड पे, ना मैंने ट्रेंड ट्रेड में, मैंने कोई रिस्क ही नहीं लेना इस बिजनेस में. सिर्फ डाइवर्जन ट्रेड देखते जाएं. आ जाती है थोड़ी थोड़ी देर बाद, दिन में 2 भी आ जाती है, दिन में 1 भी आती है, आपका रिस्क 0 हो जाता है, नेक्स्ट टू नो रिस्क एट ऑल. क्योंकि होता ये है कि जस्ट यू हैव टू सी at 9:25 this number is 42.74, right? You're like, all right, normal जिस तरह आता है, ये स्विंग आई है 31 पॉइंट्स की, नीचे आई है, रिट्रेस हुई है, उसने फिर एक एक्सटेंशन बनाने की कोशिश की है जो नहीं बनी. It made another higher high. अब ये नंबर देखें 4276 है, right? I believe it's 4276. So you said, all right, 4276 is higher than 4274, right? But at the bottom, look at my strength. Strength नहीं ऊपर गई. So technically speaking, if this is 4274, right? This point. Why is 4276 lower? So this is called the divergent. So आपको पता है कि 4276 तो यार इधर होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए, नहीं आई ना. So जब नहीं आई तो आपको एक क्लू मिल गया, ट्रेंड may change, right? आपको इतना बड़ा क्लू मिल गया और इतनी जबरदस्त ये आई, या 19 पॉइंट की डाइवर्जन आई है. आपने एंटर कहाँ से होना है बाय द वे? सेफ ट्रेड में, जब आपका ट्रेंड चेंज हो जाए. यहाँ पर मार्केट में दबा दे बेशक, right here. Because what happens is it'll come down and it may go back up, right? So diversion is there, but it's not confirmed. आपने सिर्फ यहाँ से मार्केट बटन दबाना था. अब अगर ये 19 पॉइंट्स की आई है तो I would enter at 42.65. ये जो नंबर आ गया इस पॉइंट पे मिड बैंड इसने क्रॉस कर दिया प्राइस ने 42.65. and look, even from I gave away 76 to 65, I give it away. So 70, 76, 75, almost 10 points मैंने छोड़ दिए कि मैंने यार रिस्क नहीं लेना, कि पता नहीं डाइवर्जन यहीं से वापस ना ऊपर चली जाए ना प्राइस, right here you enter and then start trailing your profits. 1 पॉइंट 2 पॉइंट, और आपकी अच्छी किस्मत लगे तो यहाँ से लेके 65 से लेके 56 तक 9 पॉइंट यार, 8 पॉइंट. ये जो sacrifice किए हैं points, हाँ. इनको DOM को बता दें कि अगर if they want to cover that, they can increase the quantity. Yeah. So right here, I still say take 2 points यार, क्योंकि हमारी जो 30-20 की डाइवर्जन है, एवरेज डाइवर्जन 14 पॉइंट की एवरेज. कोई 20 पॉइंट की है, कोई 5 पॉइंट की है, कोई 8 पॉइंट की है, कोई 11 पॉइंट की है, एवरेज 14 पॉइंट की. मतलब ये डाइवर्जन 19 पॉइंट की आई है. So this, when you look at everything in between, there's a few things happening and we plot it for a reason. पहला ये प्राइस है, उसके बाद ये लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स,
उसके नीचे ये लिखा हुआ है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुए हैं इस टाइम से लेके इस टाइम तक, और ये लिखा हुआ है 175%। ये वाली जो मूव है इस मूव का 175% आया। So if you want to take zero risk and you want to not lose any money, take 2 points, 3 points, 5 points. Just take 2 points with 5 lots, 2 points 6 lots, 2 points 2 lots. पूरे दिन का प्रॉफिट यही निकल जाता है, पूरे दिन का $500 एक ट्रेड में लोग बना लेते हैं। वो सिर्फ देखते रहते हैं डाइवर्जन आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है। It works both ways, नीचे जाते भी ऊपर जाते भी। And diversion is when price and trends are opposite, right? They don't go Then the strength strength and the price are opposite. okay. And approximately, can we expect 1 or 2 times in a day? ओ सब तीन आ रही होती है, नो प्रॉब्लम। ये फ्राइडे की एक डाइवर्जन तो ये 19 पॉइंट की आई, उसके बाद आपकी अगली डाइवर्जन सी एक और आई, थोड़ी वीक थी लेकिन आई जरूर। ये नंबर देखें 4255, इट मेड अ लोअर लो, राइट? सो दिस वुड बिकम 4255, राइट? प्राइस वेंट बैक अप, केम बैक डाउन 4251। यार आप कह रहे हो हैंग ऑन अ सेकंड, if this is 55, 51 gotta be here, but it's up here, right? So you know your trend is gonna change because divergent to the upside aa rahi hai. So lower low, lower high, sorry, in a diversion to the upside trend will, ye 14 point ki diversion aayi hai right here. So you just looked at the strength where the strength wasn't there. So 4255, this number. So when a diversion, just look at 4 points. This, next one here, and here. You're like, man, this doesn't make any sense. So it means my trend will change. And where you would get a confirmation, right here. So right here I would enter. I will not, like, because I don't want to lose any money. So look, from 51 to 65 is almost 14 points. How many points I'm gonna sacrifice? I'm gonna enter right here at 62, right? So still I have a 3 point or 2 points left into this, right? पहले ही मैंने 2 पॉइंट उधर ले लिए थे, 2 पॉइंट इधर ले लूँ, $100 उधर, $100 इधर, that's it। तो उसके बाद कंप्यूटर बंद कर देगा। You can have stop loss. जैसे आप डाइवर्जन स्पॉट करते हो वहीं से भी बाय या सेल? यार प्रॉब्लम ये है कि आपने अगर यहाँ से डाइवर्जन स्पॉट कर ली है, ठीक है, प्राइस ऊपर चली गई है। My issue is कि अगर यहाँ से ये ऊपर जाके मिड बैंड टेस्ट करके यहाँ से नीचे आ जाए, right? Then you are really stuck in here, right? तो डाइवर्जन को एटलीस्ट अगर आपने थोड़ा सा इजी होना है कि इसको मल्टीपल डॉट्स, चलो आपने यहाँ से ना लिया लेकिन टॉप ऑफ द बार लेंगे ना, तो 3 डॉट लग लेने दें, 4 लग लेने दें, क्योंकि होगा ये कि वो अगेन प्राइस ऐसे नहीं चलती कि सीधा इसी तरफ चल पड़े। It will go up down, up down, up down, up down. यहाँ पर भी जाके ऐसे नहीं चढ़ रही कि फौरन चढ़ रही है। So you're waiting, oh my God, it's gone against me 10. लेकिन जब तक वो ट्रेंड तक आप सही हो, as long as you're okay, आप यहाँ पर भी वेट कर सकते हो कि मिड बैंड पे आएगी, मिड बैंड के करीब आएगी तो मैं एंटर करूँगा, no problem। तो अगर आपने यहाँ पर नहीं लेना, आप कहते हो I'm not gonna buy top of the bar, I will let the price come down, diversion है, और मैं मिड बैंड से बाय कर लूँगा, then you can get more points, right? लेकिन सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि इसको ना ग्रीन हो लेने ताकि डाइवर्जन कंफर्म हो ना। अब यहाँ पर जिसने ज्यादा पॉइंट लेने हैं ना, मैं पर्सनली क्या करता हूँ, यहाँ से फौरन 1-2 पॉइंट उठाता हूँ या एक ही पॉइंट उठा लेता हूँ। Some people wait, they wait, यहाँ पर आके थोड़ा इवन बॉटम ऑफ द बार वो उठाएंगे और फिर वापस ऊपर उसको राइड करने देंगे, राइट? सो यू कैन वेट मोर, बट उस वक्त तक कई दफ़ा नहीं भी होती, कई दफ़ा वो सीधी ऊपर निकल जाती है, राइट? तो डाइवर्जेंट ट्रेड विल नॉट लाइक आपको तंग नहीं करेगा, बिल्कुल। तो इसमें भी 2-4 पॉइंट जितना भी आपका टारगेट है, 2 पॉइंट रखें 2 लॉट से यार,
$200 का ट्रेड बन जाएगा, 300 का बन जाएगा। इसमें हम स्टॉप लॉस जैसे नहीं स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या होल्ड कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ एंटर हो भी गया हूँ, राइट, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा अगर मेरा ट्रेंड यहाँ चेंज हो गया, तो मेरा ट्रेंड चेंज हो गया तो आई विल एग्जिट, राइट, सो Close the trade. क्लोज द ट्रेड। सर जो डाइवर्जेंट ट्रेड में मोस्टली यही होता है कि हमने प्राइसेस मैच करनी है। प्राइस मैच करनी है, ये नंबर मैच करने हैं कि मेरा लोअर लो है और ये लोअर लो है, ये लोअर तो ये वाला नंबर तो इससे लोअर है, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ लोअर नहीं गई, राइट, सो दैट जस्ट स्ट्रेंथ एंड बार्स, डाइवर्जेंट ट्रेड में स्ट्रेंथ एंड बार्स। I'll now explain you another type of trade that we've been testing, कि उसको हम कहते हैं retrace divergent। डाइवर्जन के अंदर ये बड़ा straight divergent trade है, higher high another जबकि एक दिन लाइट ऑन कर रहा था, I'll write it down so everybody can understand। There's so diversion to the downside. To do a diversion to the downside, price made a higher high, right? Came down, price made another higher high. That's how the numbers would look, higher high, higher high, right? At the bottom, you have your strength going. Strength went up, came down, but the second time, it didn't make it. So this is your point number 1, point number 2, point number 3, and point 4. Look, 1 is matching with 1, like 1 is matching with 3, but 2 is not matching with 4. So this is called the diversion to the downside. अब ये आपकी midline चल रही है. So I would have, क्योंकि होगा ये कि अगर ये बहुत high चल गई, right? तो अच्छा, by the way, we would make a higher, नीचे आने शुरू हो जाएगा price, क्योंकि अगर ये ऊपर निकल गया, right? तो strength भी तो catch up कर जाएगी ना, तो diversion तो नहीं हुई. So diversion generally start when the price is starting to come down, लेकिन strength अभी वहीं रुकी हुई है. So I again, when it comes down, I will make sure कि ये इस mid band को cross कर दे, ताकि मुझे sure हो जाए यार. So that's how I would enter the trade right here. This is my entry point. And color change भी। कलर चेंज हो तो कलर चेंज हो, फिर वापस आने दे। अगर आपको यहाँ नहीं एंटर होना कि यार, क्योंकि आपका कलर पता कहाँ चेंज होगा, प्रॉब्लम ये है कि कलर तकरीबन यहाँ जाके चेंज होता है, क्योंकि 5 पॉइंट्स आपने वो भी देनी है, राइट? सो इफ यू वांट टू वेट, लेट द प्राइस कम बैक टू हियर मिड बैंड, फिर यहाँ एंटर कर जाए, नो प्रॉब्लम। और अब डाइवर्जन टू द अपसाइड ये होगी, प्राइस नीचे गई, it made a lower low, right? Went back up, made another lower low. So this is to the upside. You're like, all right, reasonable, ऐसे ही होता है. आपकी जो strength line है, वो ऐसे दिखाएगी. So point number 1, point 2, point 3, point 4. Whenever 2 and 4 don't match with each other, diversion to the upside is coming. Again, 2 and 4 are not matching. So out of these 4 points, whenever 2 and 4 don't match, your आपकी diversion लग गई है. So if basically अब मैं क्या करूँगा, ये mid band चल रहा है, I would let it come to here and enter right here. That's it. So as long as कि आप diversion ही pick कर लो ना इस सारे trace में, तो let me see if I can pull something, it's called a retracement diversion. वो भी अच्छी पैसे दे जाती है, मैं देखता हूँ. Doesn't happen often, but it does happen in a sense. ये उसके opposite चलती है. Let me see if there is a retracement diversion. Yes, there is. बंद करी.
So everybody took a note of this too, right? अच्छा एक ये भी डाइवर्जन होती है. जब आपकी स्ट्रेंथ वायर निकल जाए, बार्स ना बाहर निकले, आपको क्या यार, अब इसमें भी 4 पॉइंट्स ही हैं, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ तो बाहर आ गई, लेकिन look at this, what is happening here. Let me see if this will make sense. Okay, take a look at this number. 65, right? 67, right? So 65 is lower than 67, right? But your strength is higher than 67. So ये भी scale max make sense नहीं कर रहा ना. So यहाँ पर भी एक reversal हो सकता है. So अगर strength पहले निकल गई है, so वहाँ से भी reversal आ रहा है. So every time if you just keep matching these bottom numbers, so here there is a diversion to the upside. देखिए दो diversions लगी back to back. एक divergence ये लगी कि 55 and 51. So this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. Alright, of course, 2 and 4 are not matching, trend will change. Right here you would enter, make 2 points. पर आपको एक और trade beneficial लग गया कि हुआ ये कि जब ये तेजी से overbought हुई है, strength तो overbought हो गई है, then you have another 2 points. आप ये point देखो, right? जब निकल गए उस trade से, right? आप कहोगे मैंने ये आप ये kind of plot कर सकते हो already कि इसने कितनी ऊपर जानी है diversion में, right? अब ये वाला जो number है 65, ये 65 आ गया, ये देखें 67. Look at this. Strength ऊपर है, लेकिन आपकी cliff ऊपर नहीं है अभी, right? तो again trend will change. नहीं तो आप यहाँ पर तुम्हारा एक ट्रेड ला डालो, अब निचली वाली राइट ले लो, अब ऊपर वाली ली है तो सिर्फ आप बार्स का टॉप और बॉटम ही मैच करते जाओ ना, तो it'll give you good enough trades. इस सिचुएशन में तो आपने पैसे कमा लिए थे, राइट? एवरीथिंग इज फाइन. अब आप बताओ कि इस सिचुएशन में भी तो आप 2 पॉइंट ले लिए ना, कि ये देखें ये अगर आपका पहला और तीसरा सेम हो गया, 2 and 4 सेम नहीं हुए, so right here, enter here, make your 2 to 3 points. तो डाइवर्जन ट्रेड नहीं मिस करो यार, कभी इतनी आसानी से. मुझे तो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि यार डाइवर्जन लग गई है थ्रू आउट. मैं तो थर्सडे एंड फ्राइडे फ्लू की वजह से गया नहीं, वरना जनरली तो मैं पूरा दिन एपेक्स के एग्जाम ही डाइवर्जन से पास कर रहा हूँ यार, मैं और तो कुछ नहीं पास कर रहा. यू कैन टर्न द लाइट ऑन. सो स्ट्रेंथ एंड बार्स की बॉटम एंड टॉप देखी जाए यार. Strength for red belly, right? हाँ जी. Red So belly. this is Bottom, strength. yeah. ये strength, buyers and sellers की RSI, relative strength index, right? Yeah. So between candle trade, between trend trade, between overbought, oversold, इस तरह आपने कहा कि यार वो तो और ज़्यादा easy confirmation होगी, black candle देखो वहाँ से enter हो जाओ. Between divergent trade, everybody should be making a couple of $100 a day minimum. I don't know anybody who tunes in. I have one student, he an average makes $800 a day. He made on Wednesday $250 in 4 minutes, and he knows everything about it. And I told him go for a walk, man. And he didn't. He go for a walk, but at 4 p.m. he was negative $400. Because what happens is फिर आपको ख्वाहिश होती है कि एक ट्रेड और लगा लो, 2 और लगा लो, 3 और लगा लो. तो नो, अब मैं अपना इतना पक्का डिसिप्लिन है, मुझे पता मेरा ईपैक्स का एग्जाम है, मेरे ट्रेड कॉपियर लगाया हुआ है, बिकॉज आई वांट टू शो बाय एग्जांपल, राइट? एंड आई एम ऑलमोस्ट डन माय 4-5 अकाउंट्स इन 4 days. और अब ये हो जाएगा, क्या है $200 एक दिन बना लिया,
Yeah, on a Friday I made $450 on my account. So 3 days में I'm up 26,500 you have to make. In your APAC exams, they give you $25,000. So you have to make in 7 days $1,500. So one day I made 300, other day I made 200, then I made $450. I'm very close to 26,000. And then the moment I just have 2, 3, 4 days left. I have one guy who already passed the exam, right? तो मैं ये कह रहा हूँ यार हमारे सॉफ्टवेयर से आप बाहर जाओ एग्जाम पास करो अपना रुपया भी नहीं डालो यार और आप like go out there and make money, right? So because they will really polish you. You can put your own money. Before the Apex, I was telling everybody $250 Apex अपने GFF में डाल दें या AMP futures में डाल दें और रोज के 50 निकाल सकते हैं यार $250 से माइक्रो कर करके. I know students who make every single day, you know, because that's how crazy my life is, that because I live and breathe trading, right? So every single thing that is happening in my life, I look at points. मैं बार बार ये एग्जांपल देता हूँ, गाड़ी की किस्त है, लीज है कंपनी की, 2 points a day, right? कहीं वेकेशन पे जाना है, 3 points a day, right? So as long as you keep your target, you can do it. जी सर. Apex ਦੇ 7 ਦਿਨ ਨਾ ਕਿ 30 ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਟੇਗੀ $30, ਠੀਕ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $1,500 ਕਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣੇ. ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੇ 1500 ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਕਿਨ 7 ਦਿਨ ਮਿਨੀਮਮ. ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1500 ਪੂਰੇ ਕਹੋ ਕਿ they don't want crazy like fanatics ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦੇਖੇ ਤੇ ਰਾਉਂਡ 1 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਇਆ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗਾ ਯਾਰ. ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ out of 30 days. Actually, to be honest, they don't even care how long you do the exam for. क्योंकि I just say कि पहली फीस ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ 30 days ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ $200 a day ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਯਾਰ 5-10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 2000 ਕੱਢ ਲਓਗੇ. and then don't trade after, don't over trade it. ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ 1500 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਕਰੋ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮਾਈਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਸਿਰਫ 1500 ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਯਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕਰੋ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ $15 ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਤਾਂ ਔਨ ਕਰੋ ਨਾ. ਦੈਟਸ ਇਟ. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 26-500 ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹਾਊ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਹੁਣ ਰਾਊਂਡ 2 ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ $30 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਲੈਵਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ. ਲੈਵਲ 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 2500 ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ $30 ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦੇਤਾ, $30 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, $30 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਡੇਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ 5 ਮਾਰਕੀਟਸ ਦਾ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਰਾਊਂਡ 2 ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $2500 ਕਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ 10 days ਦੇ ਵਿੱਚ. ਅਗੇਨ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਥਲੀ ਫੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਫਲੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੋਏ ਗਰਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਫਲੂਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕਿ they will add 2 more conditions to this. ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ you cannot make points during news. News mean ਕਿ CPI data ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ 30 ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ. They will not let you trade during news. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ no problem, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰੀਅਲ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ performance account, meaning they want to make sure you can pass without market volatility. ਤੁਸੀਂ and they have to ਹੁਣ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੂਲ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏ, they want to make sure ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ NASDAQ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ S&P, ਇੱਕ ਦਿਨ Russell. They want to see consistently ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 1500 ਕਮਾ ਲੈ ਫਿਰ 1500 ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲੈ 1500. They want to see ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਡੇਲੀ ਬਹੁਤ ਨਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈਗਾ, like his mindset is stable, his trading behavior. ਉਹ ਫਿਰ like ਉਹ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, they want to copy your trades eventually they want to copy your trade, and then round 2 is 2500. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Then it's yours.
money is yours. 27,500 ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। नहीं 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 27,500 नहीं 25 से तो उत्ते उत्ते ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ 20,000 ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਮੇਰੀ 2500 ਮਾਈਨਸ 2500 ਜਿੰਨਾ minus। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹ minus ਨਹੀਂ ਕਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਆਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣ ਜਾਵੇ then treat it with respect ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ 200 ਪਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 2500 ਬਣਾਤਾ ਬਫਰ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 3000 ਤੇ ਗਏ ਨਾ 500 ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ 2500 ਤੋਂ 3000 ਗਏ ਹਰ 500 ਨੂੰ ਪਰ ਲਈ ਜਾਓ ਨਾ ਯਾਰ ਕਿ ਲਾਈਕ you want to make sure you cash out right so the idea pehla hai pass the exam because I don't want none of you guys to lose your own money man I will feel so bad कि आपने पैसे डाले हैं हमारी मेंबरशिप भी पे कर रहे हैं और अपने पैसे भी लूज़ कर रहे हैं इस वजह से हम आपको ट्रेडिंग में नहीं लाते कि आपका नुकसान हो हम ये चाह रहे हैं कि यार आप एपेक्स से सीख लो कुछ सस्ते में सीख लो यार कैंडल टू कैंडल की एंट्री एग्जिट पोजीशन बता सकते हो? ये देखिए सर सिर्फ कैंडल टू ये देखिए कैंडल है ना यहाँ पर एंटर कर दें लेकिन उसमें क्या उसको उसको सिर्फ मिड बैंड का वेट करना नहीं नहीं कोई मिड बैंड नहीं है पूरी कैंडल फॉर्म हो गई है तो बाय एंड सेल कर दें लेकिन उसमें श्योरिटी कितनी होगी कि पॉइंट्स एक आध पॉइंट तो निकल आता That's है एक दो पॉइंट ही लेना है यार कैंडल टू कैंडल कोई मसला जैसे ब्लैक कैंडल में तो आप अपनी पोजीशन ले हाँ ब्लैक कैंडल फॉर्म हो गई पहला वाइट डार्ट आया दूसरे तीसरे पे आप एंटर कर दो तो आप टॉप से भी एंटर करते हो तो या इट्स फाइन नो प्रॉब्लम आपने टॉप से करना है वरना आप वेट कर लो कि मैं मिड बैंड से एंटर कर लूँगा क्योंकि ब्लैक कैंडल तभी बनती है जब 2-3 कैंडल्स उसके होता ये है कि ब्लैक कैंडल ऐसे बनती है कि ये प्राइस नीचे आई प्राइस वापस ऊपर गई तीसरे बार के बाद ब्लैक कैंडल बन जाती है राइट बेसिकली फोर्थ कैंडल से हाँ फोर्थ बार ऑलरेडी तो आप फोर्थ पे खड़े होगे जब आपने एंटर किया तो अब आपके पास दो ऑप्शन है कि अगर मार्केट तेज जा रही है तो यहीं से चढ़ जाओ गाड़ी पे और एक दो पॉइंट ही लेने हैं कि यार हमने स्कैल्पिंग करनी है हमने यहाँ बैठ के अगेन पॉइंट्स ना ज़्यादा सोचें क्वांटिटी ज़्यादा देखें 2.4 लॉट्स 2.3 लॉट्स तेज़ी से जाके डाइवर्जेंट ट्रेड में तो मैं 5 लॉट्स से भी घुस जाता हूँ यार आई डोंट टेक एनी वरी अबाउट इट कि यार डाइवर्जन है ट्रेंड चेंज होगा 2 पॉइंट तो निकल आएंगे तो रेदर 5 लॉट्स टाइम्स 2 पॉइंट तो एक पॉइंट होता है $50 का 2 पॉइंट्स होते हैं $100 के 5 क्वांटिटी होती है $500 मैं एक ही ट्रेड में डन हो जाता हूँ यार यू नो रियली डोंट नीड टू वरी अबाउट इट कि मैं अब एक दफ़ा आपका टारगेट पूरा हो गया चले आप एक पॉइंट ले लें एक पॉइंट 2 क्वांटिटी लेकिन इसको एक माह पहले पूरा टेस्ट कर लेना 20 दिन टेस्ट कर ले एक हफ्ता टेस्ट कर ले कि यार मैंने एक पॉइंट लेना है एक पॉइंट लेना है एक पॉइंट लिया $50 क्लोज कर दिया अगली डाइवर्जन ली अगली कैंडल ली तो रोज़ का $50 तो अपने अकाउंट में डाल लेना यार सो अगेन आई कैन लुक एट एनी चार्ट एंड आई कैन से यार फ्री के पॉइंट चल रहे हैं राइट तो अब रेदर देन के मैं यहाँ से यहाँ कितने 8 पॉइंट लूँ एक पॉइंट 2 पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट that's it you don't need to go crazy अगर कोई मार्केट मूवमेंट या वो रेंज में हो तो भी आती है डाइवर्जन किधर अगर मार्केट की मूवमेंट रेंज में हो हाँ हाँ आ जाती है डाइवर्जन आ जाती है डाइवर्जन आ जाती है एटलीस्ट 1 से 2 डाइवर्जन डेली आ जाती है 30-20 पे इवन अगर रेंज बन रही है मूवमेंट के हाँ। आई नो कि एक ही रेंज बन नहीं वो जनरली वो बाउंस करेगी ना लेकिन थोड़ा जल्दी कर जाएगी स्ट्रेंथ निकल आएगी या नहीं आएगी तो लेकिन बन जाती है आपका जो फेवरेट है वो डाइवर्जन मेरी डाइवर्जन है क्योंकि यार लोग फ्यूचर्स की ट्रेडिंग में ना डरते हैं डरते इसलिए है कि वो कहते हैं यार कि इसमें स्टॉप लॉस लगाते नहीं है और वो कहते हैं मैंने फिर यही एनालिसिस निकाला है कि अगर आपने फ्यूचर्स की ट्रेडिंग करनी है फिर आपको पेशेंस होना पड़ेगा और डाइवर्जन का वेट करना पड़ेगा फिर आपका नुकसान नहीं होगा क्योंकि स्टॉक्स में ये फ़ायदा है कि एप्पल गिर गया आपने 100 एप्पल का लिया हुआ $100 का वो 50 पे रह गया आप ही का है ना फॉरएवर आपका रहेगा जब तक एप्पल बैंकरप्सी नहीं होगी तो फ्यूचर्स में क्योंकि वो जब तक नेगेटिव चलता है जब तक आपका अकाउंट नहीं ख़त्म होता तो या तो आप क्लोज करो अगर आपने नहीं क्लोज करना
तो फिर डाइवर्जन का वेट करो या ट्रेंड ट्रेड लेते रहो। तो लेकिन आपका एक तुक्का लग गया या आपका ट्रेंड ट्रेड ही लग गया, 2 पॉइंट आ गए, आपका 100 का टारगेट था, फिर ना ट्रेड करो यार। तो ये प्रॉब्लम अगेन इस बिजनेस में, ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपके पैसे नहीं बनते, प्रॉब्लम ये है कि आप पैसे वापस कर देते हो, और इस बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नाइट सेशन का हाई लो है वो आप एक्सप्लेन करेंगे? वो अच्छा, वो होता ये है, वो दिन में एक दफ़ा ट्रेड आती है, वो आती है एग्जैक्टली 9:30 पे। कभी आप हमारी मॉर्निंग की प्रेजेंटेशन, आप तो डैनियल के स्टूडेंट हो, आपको देख डैनियल सुबह आके क्या कहता है कि नाइट सेशन ये बनता है 30-20 से, राइट। 30-20 के चार्ट पे अगर आप देखो तो दरमियान में एक लाइन आ जाती है डेट के बाद, तो 12 बजे से लेके अप्रॉक्सीमेटली 9:20 तक AM, राइट। आप सिर्फ ये देखते हो कि मेरे 30-20 में प्राइस हाई कितनी गई और लो कितनी गई, बेशक जितनी मर्जी दफ़ा हो, आप एक पॉइंट लगा लेते हो यार कि ये गई 4500 हाई, हाईएस्ट हाई, मेरे पीक हाईएस्ट हाई ऑफ द नाइट सेशन 4500 थी, मेरी लोएस्ट लो 4000 थी, ठीक है। अब आपको ये पता लग गया कि व्हाट डू वी से इन द मॉर्निंग, आपको बताते हैं कि आपकी बेस क्या है। बेस कहाँ से निकलती है, पेमेंट पॉइंट्स, ठीक है। अगर प्राइस अच्छा, इनका मिड क्या आया 4250, दोनों का डिवाइड कर लिया ना, तो 4500 प्लस 4000 मिड आ गया 4250। ये पीपी नहीं है, ये इसका मिड लाइन है, इस दोनों प्राइसेस का मिड है। हम क्या कहते हैं जनरली, बेस इज डाउन बिकॉज प्राइस जो खुल रही है ना वो तकरीबन पिवट पॉइंट से डाउन है, ठीक है। और आप 240 के मैजिक बैंड से, सिर्फ जो बैंड चल रहे होते हैं उससे हम निकालते हैं प्रेशर, वो निकलता है प्रेशर, जिस तरफ मैजिक बैंड्स का रुख हो वो प्रेशर बताता है। ये प्रेशर इज डाउन, पिवट पॉइंट से बेस निकल आती है, बेस इज डाउन। और तीसरी चीज होती है कि अगर ये प्राइस मिड लाइन से डाउन खुल रही है तो प्राइस यहां खुल रही है, सो चांसेस आर कि 9:30 प्राइस विल गो एंड टेस्ट योर नाइट सेशन लो। इसी चलती गाड़ी में आप बैठ जाओ और 2-3 पॉइंट लेके बाहर आ जाओ, तो वेरी टाइम सून ऐसा ही स्टार्टिंग होता ही 9:30, मार्केट खुलती है और उसमें नाइट सेशन लो टेस्ट करना होता है जाके, कि यार 4000 में जाके टेस्ट करूँगा और इसी में 2-4-6 पॉइंट लो और बाहर आ जाओ। और अगर आप पीपी से तो पीपी से आप हो, मिड लाइन से आप हो, ट्रेंड आप हो, प्रेशर का इतना फर्क नहीं होता, तो आपके इसने जाके ये 45 टेस्ट कर, और ये चेक करते हैं 30-20 का। ये 30-20 30, एक मिनट इतना अंदर पीपी तो होते हैं नहीं मिड लाइन तो थल्ले हाँ, और फिर रिस्क हो गया फिर ना लो ना ट्रेड, डोंट वरी। तो ये ट्रेड आता है दिन में, पिछले कई दिनों से या इधर खुल रही है या इधर खुल रही है, तो वो ट्रेड ही नहीं बनता, वो खुलती ही R2 पे है तो या S2 पे है कि आपको अब क्या करोगे, राइट। तो 30-20 ना पीपी शो नहीं हो रहे। नहीं 60 मिनट थे आ रहे हैं, वर्जन 8 थे, तो इट्स देयर, इट्स जस्ट इवन मेरा भी लगा है नहीं आएगा, 60 मिनट तो चेक 60 मिनट तो आ जाता है कि नाइट सेशन। तो आप सारे जो है ना, ये 2 ट्रेड तो जरूर टेस्ट करो, कैंडल ट्रेड और दूसरा आपका ट्रेंड ट्रेड साथ साथ। मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप मिड बैंड का ट्रेड भी दिन में 15 मिड बैंड आए ना तो ऐसी 12 पास हो जाएंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपको पता होना चाहिए कि हर मिड बैंड के ट्रेड का रिस्क होता है 3 पॉइंट क्योंकि थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी कहती है कि अगर ट्रेंड चेंज हो तो निकल जाओ। मैं ये कहता हूँ कि उसको फोर्सली 12 टिक्स पे लगा दो यार, आप खुद ही ट्रेड से बाहर हो जाओगे, रेदर देन कि वो लॉस बढ़ता जाए, आप प्राइस आएगी, प्राइस नहीं आएगी, वेरी रेयर चांसेस है कि प्राइस वापस आ जाए लेकिन आप एक दफ़ा निकल गए हो। मिड बैंड का एक क्वेश्चन है, आप जी। 15-10 पे हम देखते हैं मिड बैंड, जी जी जब वो हमें पता है पीछे ग्रीन जोन है, हाँ वाइट जी। जोन है, तो वो मार्केट एक
नहीं मैं पहले ही रेडी रहता हूँ, तो मैं मिड बैंड के सामने जाता हूँ, उसके वही पास price बाय ऑर्डर लगा दिया, पहले लगा दें। पहले लगा देता हूँ। Okay, so it's क्योंकि okay. अगर और नीचे मेरी एटीएम बनी होती है, ठीक है, जो 12 पॉइंट लगेगा उसको ऑटो करेगा, तो दो चीज़ें होंगी ना, मिड बैंड पे गई, हाँ। या तो वो 12 पॉइंट पे मुझे बाहर निकाल देगी, ठीक है। और जो है तो कुछ लोग जैसे मेरे नए स्टूडेंट्स हैं मिड बैंड वाला ट्रेड माइक्रो पे लेते हैं। वो क्या करते हैं कि 15 डॉलर ही है ना, मैक्सिमम $15 का रिस्क है मैक्सिमम, तो मिड बैंड वाला 15 वो लगा दो, डाइवर्जन वाला मिनी में कर लो, लाइक तो माइक्रो और मिनी उधर 100% खेल लो, मिड बैंड साथ साथ चलाते रहो, राइट। सो मिड बैंड माइक्रो में कर लो, एंड ऑफ द डे $200-300 बन जाएंगे यार। तो अगर आपको लगता है कि माइक्रो ज़रा बेहतर है, क्योंकि $15 का रिस्क है, तो आप 12 टेक उधर लगा लो। So you always do it before, आप पहले लगा दें। पहले लगा देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से इसने मेरा मिड बैंड प्राइस है, और मैं साथ साथ मूव करता रहता हूँ। लेकिन आप हर मिड बैंड को जज भी कर सकते हो, ऑनेस्ट टू गॉड। ऐसा नहीं है कि अभी फॉर एग्जांपल एक मिड बैंड चढ़ रहा है, वो हो गया, प्राइस ने ट्रेंड चेंज किया और वो 30 पॉइंट चढ़ गया, ठीक है, मैं एक ही डायरेक्शन में 30 पॉइंट चली जाए या 20 भी पॉइंट चली जाए ना, वो मिड बैंड सेफ नहीं रहता। अब वहाँ पर मेरी रेशियो 50% हो जाती है। आपको पता है कि इट विल कम डाउन, और शायद क्योंकि 30-20 में ओवरबॉट हो रहा है ना, तो यू हैव टू काइंड ऑफ यूज योर कॉमन सेंस कि वहाँ पर मैं शायद फंस जाऊँ। तो वो लेकिन कई दफ़ा आके ले जाता है ऊपर, लेकिन मैं कई दफ़ा अनाउंस कर रहा होता हूँ कि यहाँ पर रिस्क शायद 50-50 है, या 90-10 है, 70-30 है। तो अगर आपने मिड बैंड के ट्रेड से बचना है तो कोई और ट्रेड कर लो यार, डजंट हैव टू बी एक ही तरह का ट्रेड, तो नहीं है, 6 तरह के ट्रेड है जी जी। आरएसए ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ हाँ हाँ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ Trade ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਆਣਾ ਆਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ 4-5 ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲੂਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲਾਂ। देखो मैं पहले ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਅਗਰ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं ना ਤੇ ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਕੈਂਡਲ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦੋ। ਕਿ ਫॉर एग्जांपल ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਈਡੇ ਚ ਨੇ ਉਹਨੇ 24 ਪੁਆਇੰਟ ट्रेल ਕੀਤਾ है। हाँ जी लाइट बंद करना जी, सॉरी गुरदीप लाइट बंद करना। ये देखो जी ये हुआ है, ये देखो ਇੱਥੇ 100 ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ 11:33 ਤੇ 100% ਸੀ। look if you entered here, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ you don't have to worry right here. So you at this time the price would have been 90 100, ठीक है, at this point it would have been 100. it gave you ऐदा नहीं ਹੁੰਦਾ कि ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਰੀ ਜਾਵੇ, ठीक है, generally price does come down 1.2 points, goes back up one, लेकिन अगर किसी ने इधर एंटर किया ਉਹਨੂੰ enough opportunity ਮਿਲੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ, तो like rather than कि ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰੀਟ੍ਰੇਸ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ 1-2 ਪੁਆਇੰਟ ਲਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ। That's ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ 11:32 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਟ੍ਰੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ 12:01 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, 61 ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਈ ਮਾਰਕੀਟ, 61 ਪੁਆਇੰਟ, ਬਟ 30-20 ਦਾ ਚਾਰਟ ਹੈ ਨਾ 30-20 ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਮਿਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸੀ ਯੂ ਕੁਡ ਹੈਵ ਗਾਟ, ਕਿਉਂਕਿ $250 ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਧਰ ਲੈ ਲਏ। अगेन I can see a little bit of wick here कि price 2 बारी आई होनी, let me see exactly how many times, because अगर इधर ट्रेल हो रही है तो definitely a trail 15-10 ਦੇ ਵਿੱਚ multiple ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। give me 1 second, I can let me see what happened on a Friday. You can add the more bars, data series. I will go 1500 number of bars. हाँ जी, 70% off, save 70, save 70. We don't make any money from it.
42.77 ਇਹ ਦੇਖੋ 42.77.75 10.56 ਤੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਾइस ਚੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ it will go in one direction along the lines it gave you so many opportunities to exit ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ enter ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ exit and then finally right so ਇੱਕ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਚੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ RSI 100 ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਉਦੋਂ टाइम देख लो ना ये देखो फॉर एग्जांपल पहली बारी उन्हें पुश कीती है 21 पॉइंट देखो टोटल है चढ़ी सी 60 पॉइंट्स वन डायरेक्शन ठीक है और पहला 21 पॉइंट दे विच तुसी टाइम देख लो ना let me change it so my both cursor will move at the same time it's called global I can make this to global when मैं इधर move करूँगा तो it will do the same thing so right here it was at this point देखो 11:39 है इधर तो मैं एंटर ही नहीं होना सी 93 सीगा मैं कितने एंटर करांगा 100 ते 99.7 99 ਸੇਫ ਹੈ ਬੰਦਾ 100 ਪੂਰੇ ਦੇ ਕਰਿਆ पूरे 100 ते जान दो even if you entered at right here 99.98 ठीक है you already could have taken 6 points man so it's not something के थोड़ा ट्रेल होएगा 15-10 भी ते आके तो दे रहे हैं ना like so जब आपने 100 पे एंटर कर दिया चलो मैं 100 पे आ जाता हूँ जी यार के I want to make sure that I am at 100 and कितनी दफ़ा ट्रेल हुआ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾ ਰਿਹਾ नहीं ट्रेंड ओवरबॉट ओवरसोल्ड अगेंस्ट द ट्रेंड जाता है वो ट्रेड जाता ही अगेंस्ट द ट्रेंड है लेट्स से कि मैं इधर एंटर हो गया 11:57 पे 100 right it would have been right here right इत्थे फिर दोबारा है इत्थे सीगा 100 ते ठीक है it would have been trailing with you तो प्राइस देखो 35 it went back थोड़ी अगेंस्ट गई 4 पॉइंट 39 है you saw -$200 ठीक है but it gave you another opportunity to exit out right here ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ लाइक निकल जाओगे कोई इतनी बहुत वड्डी गल नहीं है हालांकि उन्हें वो भी जाके मिड बैंड फिर टेस्ट किया and then so you don't have to worry about it like just see what is happening on 15-10 थोड़ी सी कॉमन प्रैक्टिस कर लो ना तो 100 ते 4 पॉइंट ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰ I should be patient you should patience hold like hold करो लेकिन अगर ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਫ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਸ so he gave you enough opportunity to exit out right any other question जी हाँ जी बिल्कुल जी पूछे जबकि लाइट ऑफ ऑन कर दीजिए जी हाँ जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਹਾਇਰ ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਹਾਇਰ ਲੋਅਰ ਲੋ ਰਾਈਟ ਸਰ ਹਾਇਰ ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਲੋ ਚ ਜਦੋਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਕਿ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਦੱਸਦੇ नहीं आप देखनी है यस आप खुद क्विकली कर लो ना एवरेज मतलब पूरा पीछे 12 बजे तक जाइए पीछे सिर्फ स्क्रॉल कर लो स्क्रॉल करके 12 30 मिनट का चार्ट स्क्रॉल कर लो 12 बजे तक आके सिर्फ देखो कि उसका सब तो लोएस्ट पॉइंट की है तो सब तो हाईएस्ट पॉइंट लेकिन मोस्टली की हो रहा है वो दोनों एक्सट्रीम तक खुल रही है अगर हायर हाई सी है तो बहुत ही हाई खुली तो अगर लो खुली तो बहुत ही लो खुली मिडल वाला पिछले तकरीबन 1 वीक तो मैं देख रहा है कोई ट्रेड बढ़ नहीं रहा क्योंकि लाइक ਸਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਹਾਇਰ
ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਡਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਬਟ that trade is not really a ਜਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ it's a bonus trade ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਨਾ ਚਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਸੋ ਨਾਈਟ ਸੈਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ Apex ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੜਿਆ 860 ਸਮਥਿੰਗ 9 ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ 462 ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਈ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਫਰਮ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸ ਜਾ ਰਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਲੈਟਸ ਸੇ ਉਹ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰਿੰਗ ਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ 100 ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ 200 ਉਹ 200 ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ 37 ਤੇ 50 ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਤੇ 150 ਮਾਈਨਸ ਮੈਨੂੰ 50 ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ 100 ਮਾਈਨਸ 37 ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਫਰਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੰਫਰਮ ਕਿ ਹਮ ਅਗਰ 100 ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਫਰਮ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੌਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲਾਕ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ATM ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 4 ਟਿਕਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 4 ਟਿਕਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ 4 ਤੇ ਲੈ 4 ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 12 ਟਿਕ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 12 ਟਿਕ ਥੱਲੋਂ ਚੱਕ ਕੇ 0 ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਉਹ 50 ਤੋਂ 100 ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲਾ 50 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ 100 ਤੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ATM ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ $50 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹੇਗਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਲਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਕਸਦ ATM ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਉਹ Apex ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 200 ਦੇਖਿਆ ਤੇ 150 ਲੌਕ ਹੋਏਗਾ ਲਾਈਕ ਤੇ $50 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ATM ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਆਫਟਰਨੂਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਗਰ 200 ਬਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ 200 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਫੈਕਚੁਏਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੱਢਦਾ 37 62 ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ 150 ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ATM ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਆਈ ਚੈੱਕ ਔਨ ਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਵੇ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ 37 ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ 37 ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਫਿਰ 1250 ਕੱਢੇ 1250 ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਰੀਅਲ Apex ਨਾਲ ਆਣਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੰਡੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਰੀਅਲ Apex ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਿਮ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਿਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪ ਮੈਂ ਠੀਕ no problem let's suppose ਕਿ I 4500 ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤੇ let's pick up the math exactly in ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ give me a second. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ Oh, no problem. I'm here till 5. Generally, last time ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕੋਈ problem ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ 4488 ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 4488 ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲੱਗੇਗਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਨਿੰਜਾ 7 ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਗਈ 4501 ਤੇ ਇਹ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਆਟੋ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਧਰ ਹਾਂਜੀ 4.9 ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਧਰ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ -$50
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ATM ਤੇ ਆਏ ਤੇ -50 ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਈਸ 45 or 2 ਤੇ, this stop loss will become here. Reason for ticks ਦਾ ਹੈ price moves too fast, right? ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ $50 minus threshold ਤੇ, ਇਹ ਗਈ 45 or 3 ਤੇ, ਮੇਰਾ stop loss ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। I will chase one behind. That's it. This is my strategy. ਮੈਨੂੰ 45 ਉਹ 1 ਤੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नहीं, डिपेंड करता है ना कि मैं अगर वापस इधर आ गया, अगर मेरा स्टॉप लॉस इधर हिट हो गया, कि मेरा ब्रेक इवन होया, मेरा लॉस नहीं होया, पर मेरा थ्रेशोल्ड 50 ज़ाया हो गया, because I saw this, I didn't close the trade, I let the ATM close the trade, लेकिन अगर मैं प्राइस चली गई 45 और 2 थे, तो फिर 45 और 1 थे लॉस होएगा, एग्जिट करेगा। Here is plus 50, ठीक है, but -50 एक 0 हो गया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ +100 ਦਾ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ 150, 45 ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਇਵਨ, $50 $100 $150, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ $100 ਦਾ ਪਲੱਸ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ -50 ਆਏਗਾ trailing threshold, because they look at this number that you saw +$150 and you didn't close the trade. या इतने तो इस करो ATM बंद कर दे, सिर्फ क्लोज का बटन दबा दो, फिर 150 पूरा आएगा ना थोड़ा। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 4503 ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। या उधर क्लोज करो या $50 ਦਾ थ्रेशोल्ड लिमिट ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਕਿ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1500 ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ -1500 ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ -$50, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 1450 ਤੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ $100 ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਯੂ ਮੇਡ $100 ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਗੋਲ $1400 ਦਾ ਗੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। Like ATM really only works with real true money, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਡ ਇੱਧਰ ਲੱਗਾ -12, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, it should chase $50 behind। ਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਨੀ ਦੀ ਵਾਲੀਅਮ ਦੀ exact confirmation ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ I'm moving with, I think I will double check, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਜਾ ਮੈਂ 7 ਦੀ ਸੈਟਿੰਗਸ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ 8 ਦੀ, ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। no problem, no problem, ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ 1 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। प्रॉफिट ट्रिगर जितना है 0 करना तो 1 हो जाता है, every time save करते हैं। लेकिन ऐसे ही ਤੁਸੀਂ ATM, like you don't have to put it in the to pass the exam, right? ਕਿ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਲਿਮਿਟ ਆਰਡਰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ ਫੌਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ। 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1500 ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਐਵਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ 1500 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਵਾਲਾ ਹੈਡੇਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਚ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ 1400 ਤੱਕ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਨੀਚੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ 12 ਪੁਆਇੰਟ ਥੱਲੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਡ ਬੈਂਡ 4500 ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚਲੀ ਗਈ 4501 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਮੂਵ ਮਾਈ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ। ਇਹਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਈਵਨ ਦੋ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, all of you guys can replay the back data, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। You can go and in the connections and call replay data. You can test your strategy even market is not open, ਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ हाँ जी, हाँ जी, Connections जाके कितने कनेक्शन जाके मैं तो दिखा देना, it's called, you can go in and play the previous data, एक स्पीड ਨਾਲ, 2 स्पीड ਨਾਲ, मैं तो कई बारी बह के strategy ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पिछला सारा किस्सा sorry? yes practice करने वास्ते, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ yeah, like connection ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, it should be, give me 1 second, right here,
ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰਦੀਪ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆਫ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਪਲੇਬੈਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ Playback. ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇਬੈਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪਿਕ ਕਰੋ ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਪਿਕ ਐਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਜੀ ES ਦਿਖਾ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਿਕ ਅਕਟੂਬਰ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ 6 ਤਰੀਕ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਾਟਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ES ਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਾਟਾ then continue please close all positions no problem let me do it again playback connection historical data last and let me think there's an option here market replay begin so this is a very powerful data ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ download so you can see exactly down to ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਐਡ ਸਾਡੇ ਉਹ ਐਡ ਮਾਈਨਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇਬੈਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਂ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਾਟਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਾਟਾ ਇਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ES ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਪਲੇਬੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਆਲ ਅਦਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਟ ਮੀ ਕਲੋਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਜ਼ ਮਾਈ ਇਹ ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਏਪੈਕਸ ਹੈ ਮੇਰੇ 20 ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ and I have a trade copier and you can see this one I'm only $240 left to pass my exam and mera takriban $400 reh gaya so like my lowest account is 237 highest account is 240 I will pass all of these exams together so I'm just saying okay, it is very very easy ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ a lot of people what they do is they become expert in this and then they open ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ GF let's say ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਟਰਸਟ ਹੈ ਨਾ ਕਾਲੀ GFF ਨੇ ਕਹੋ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲੋ 2000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ 10 ਦੇ 10 ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ she will trade ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ and then sister ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ 50% ਮੈਂ ਰੱਖੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਅ ਟ੍ਰੇਡ ਕਾਪੀਅਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ GFF ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਪਾ ਦਿਓ it will connect to one and just say okay go to 2000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ so again get to that down the road ke you can then play on other people's money too right that's a very common people what they do is ke they get a pool of people together ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ trade ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ now I'm disconnected I will go back into playback connection I will do a ES on Friday let me download again it will download जिन्नी ATM है ना playback इस टेस्ट करो no problem weekend पूरा पूरा ला दियो सवेर तो शाम तक डेटा नहीं खुला no problem ए देखो ए विंडो आ गई ठीक है ए लिखा है कि मार्केट रिप्ले and I can go to I can pick a date here so पूरा week तो नहीं करना October 6 and I hit play एक स्पीड ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ right so just make a ਹੁਣ market let me go and I can change this to my laptop crashed so idea is to
playing now live. Now change it to speed of 20x. Okay, V speed तेज चल. Turn the global off. ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ. However, you are playing 30 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾइस मूव हो रही है. So you can see कि इस प्राइस तो मिड बैंड तो टेस्ट कर लो. प्राइस उस मिड बैंड तक ले आओ कि देखो ATM ला दो तो ऑटो प्ले करेगा. टेस्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर हाँ जी, सकते हाँ हैं. जी. मिस वर्किंग फर्स्ट और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. सो सर एक बार डबल चेक करना क्वेश्चन पे जाके प्लेबैक क्वेश्चन देन हिस्टोरिकल डाटा देन एक सेकंड में 12 PM 2 PM ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2:45. ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ. ਇਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਤੇ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ. ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 30 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਪਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ. ਆਈ ਵਿਲ ਹਿਟ ਇਟ ਪਲੇ. ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਵ ਡੇਟਾ ਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ 30 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ. So it's not 1 times, it's 3 times faster, just so you can save time, some time, right? So you can slow it down, you can pass it. I will hit slow. I can say, okay, play at 4 times the speed. Let me bring it to a mid band. मैं ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ strategy ਲਾਣੇ, ठीक है? ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਲਾਵਾਂ. एक सेकंड थोड़ा नु ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦੇਣਾ. So I will go, what time is it? At 2:02 o'clock. So let's ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਇਹ 2:05. ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਾਰਾ ਬੈਕ ਰੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ. Takes a little bit of time to come to that and it should play. And I will get my DOM. ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ. ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਟੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਸ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ. ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਰ ਮਹੀਨਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ. doesn't matter, it just processing time ਹੈ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਪਲੇਬੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਸਟਮ. ਕੀ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਐਂਡ ਨॉन ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿ 12 ਤੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲੱਗ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ. ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ. ਅਗਰ ATM Apex ਦੀ ਖੇਲਣੀ ਹੈ ਤੇ 12-8 ਲਾਈਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਟ੍ਰੇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ 12 ਸੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ 8 ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ. मैं ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ I will do an order at मेरे मिड बैंड की चल रहे हैं right here. I can do, what is my mid band, 45 4340 4340. Let me do an order here. Chart trader and playback ATM. It's very powerful, Aji. Custom 12 the stop loss, 8 the profit. And I will do a an order right here. Buy at 4340. Order lag gaya. And I will do a play. मेरा ऑर्डर फुल हो गया. स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली लग गया, ठीक है. 12 ਤੇ है मेरा स्टॉप लॉस, है मेरा प्रॉफिट है. ऑर्डर फिल हो गया. एक मैंने दोबारा प्ले करते हैं, नो प्रॉब्लम. इट इज़ सच ए पावरफुल टूल. मार्केट बंद है, स्ट्रेटजी टेस्ट करनी है, प्लेबैक डेटा है, तो you can go over and over and over and over and over and over and play with it until you get it right. Right? You don't have to pay anybody any commission, anything. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
सब इन्ना पावरफुल टूल है. सो नाउ आई नो कि मैं मिड बैंड टेस्ट करना है जी, मिड बैंड की स्ट्रैटेजी परफेक्ट बनानी है. यू नो मिड बैंड केम एट 205 ਇੱਥੇ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਓ 146 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, no problem. So I go back here, I bring it to 146, 140, 138. ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਿਓ. It should redraw the graphs for you. ਲਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ. ਮੇਰੀ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਸਟਮ ਐਂਡ ਐਡਿਟ. ਸੋ ਆਈ ਰੋਟ ਕਿ 12 ਦਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹੋਵੇ, 8 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ. ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਹੇਅਰ. ਸੋ 12 ठीक है, slightly behind. Let it redraw. Overbought, oversold test कर लो. Divergent test कर लो. Think everything is there for you. You just want to be able to. मैं इत्थों मिड में लेना है, मैं लाऊंगा जी ए मेरी एंट्री होएगी 32 ते buy limit here and I will play here. So now it's just it's playing my data. So I'm going in my past and practicing my future, right? So this is what the very powerful is. ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਰਡਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਸਟਮ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 32 ਤੇ ਪਿਕ ਕਰ ਲਈ, 16 ਟਿਕਸ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ. ਸੋ ਨਾਓ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਵੀ ਵਿਲ ਟੈਸਟ ਯੂਰ ਟ੍ਰੇਲਿੰਗ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ. ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਟ੍ਰੇਲ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ. ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਇਟ. ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਈ ਓਨਲੀ ਸੈਟ ਦ ਸਪੀਡ ਟੂ 4. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਸਟ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਆਈਡੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ I will move my buy limit up क्योंकि मेरा उत्ते चला गया ना, मेरा mid band उत्ते चला गया. So I will move my mid band as it's moving, right? Playback data is so powerful to test your ATM. You don't have to wait कि market खुले. मैं शाम नू 6 तो बाद पिछली सारे दिन दा data test कर लेना. मैं mid band होर उत्ते ले जाऊँगा because mid band उत्ते चला गया. This is my mid band now. No problem. I'm just चार्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं. मेरे ख्याल 12/1/23 है. आई थिंक इन विल मे टाइम सर हमेशा तो सी. सो बेसिकली अगेन आई एम टेस्टिंग यूजिंग माई पास्ट फॉर माई फ्यूचर, राइट? सो दिस इज प्रीटी पावरफुल इन टर्म्स ऑफ जस्ट के अपने अपने सीखना होवे ना, जस्ट वॉच इतों सीख लो, ठीक है जी. और मैं नहीं नहीं मैनू मैं पिछे जाके देख लेना, उस पॉइंट पिक कर लूँगा ना. मैनू पता है कि 1238 क्योंकि मैनू हिस्ट्री तो पता है, तो मैनू पता है कि 138 ते मिड बैंड टच होना है क्योंकि मैं तो पिछे आ गया ना. तो अपनी स्ट्रैटेजी बार बार उत्थे टेस्ट करूँगा ना जिथे मिड बैंड टच होना है, राइट? टू मेक श्योर कि फ्यूचर दे विच मैं वो स्ट्रैटेजी पिक करा जिहड़ी उन्हें जिहड़ी व्हाट यू वांट, क्योंकि फ्यूचर विच भी मिड बैंड आएंगे लेकिन पास्ट विच भी आ चुके हैं. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਪਲੇ ਕਰਕੇ, ਰਾਈਟ? ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 138 ਤੇ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਣਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਨੋ ਦ ਪਾਸਟ ਆਲਰੇਡੀ. ਮੈਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ ਸੈਡ ਓਕੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ. ਮੈਂ 4 ਦੀ ਸਪੀਡ ਲਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਸਲੋ ਹੈ ਤੇ 4 ਇਜ਼ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ. ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ. ਲੈਟਸ ਸੀ हाँ लेकिन उत्थे तुसी टेस्ट नहीं कर सकते. मैं वैसे ही कर रही हूं कि अगर ए जो प्रोसेस हैगा मैं क्वेश्चन में बात सोच रही थी अगर ऐसी इस तरह मिडमेंट ला के वेट कर दिया अंटे जरा कदों नीचे आके जब मिडमेंट टच करेगा ਅਸੀਂ मार्केट एंटर होवांगे कि ना करनो कि मार्केट दोबारा ऊपर जाए. हाँ हाँ नहीं नहीं रियल मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. मैं सोच रही कि इस तरह नहीं करना चाहिए
वो मार्केट एंटर कर गया नहीं लेकिन देखो ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਸੇ ਰੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਕ ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ऐसी बैक ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ 33 ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪਾਸ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਟੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟੋ ਟ੍ਰੇਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਪਲੇਇੰਗ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਡੇਟਾ and I'm just testing it here because I know precisely I can go to that time and I can play over and over and over again कि ठीक है मैंने पता है कि इतों मार्केट आती है फार्मूला इधर जा रहा आ रहा then I can test it here I cannot test any new strategy in a live market because you don't know what will happen right so the idea is to the playback is to test your strategies कि देखो हुन देखो हुन इधर लगेगी ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ 12 ਤੇ 8 ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ 12 ਤੇ 8 12 ਦਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਹੈ 12 ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ओके सर कोई और भी क्वेश्चन हुआ मुझे विषय ऑडियो भेज नो प्रॉब्लम एट मेरा मिड बैंड टच ही नहीं होया जी ये निकल ही गया क्योंकि इतने हूँ थोड़ी स्ट्रैच क्योंकि वापस प्राइस मिड बैंड ਨੂੰ टच के उत्ते आ गई ना so you have to then go back slightly and to again I will go back to 138 again so this is a very precise order and fill लेंगे ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ exactly कि इत्थों मेरा order fill हो जाए then I will test everything right so anyway this is a good tool to test your strategy over and over and over again अच्छा ਤੁਹਾਡਾ question ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਟ੍ਰੇਲ ਤੇ let's go back ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ 12 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 0 ਰਾਉਂਡ ਜ਼ੀਰੋ 0 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਸਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਸਟਮ so I said profit triggered at 4 step 1 stop loss 4 ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਿੰਜਾ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 0 ਹੈ हमेशा 1 पढ़ लेंगे अपने आप जीरो कर दे फिर 1 पढ़ लेंगे ओके करते हैं करने दे रहे हैं फिर 1 पढ़ लेंगे पढ़ने पढ़ने से 1 मिल गया let me go back to what time is this 1:44 order filled order filled जी बड़ा order filled you should auto trail now target filled क्या चीज इस नहीं इसको ऑटो ट्रेल मेरा 7 का कर जाता है कि 7 में मेरे पास था 4 सर देखो जो 1 है ना सेंटर साइड पे 1 पढ़ लेंगे तो 0 करते हैं फिर 1 पढ़ लेंगे कि मेरा 7 में ना
मैं दोबारा जाता हूँ कि बेसिकली होना ये चाहिए कि एट 140 यहाँ पर मेरा ऑर्डर लगना चाहिए बाय का। बाय वो रेट कर ले ले ठीक है। फर्स्ट डे दैट स्ट्रेटजी बहुत अच्छी चली सर जी, केड़ी जी? ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਲੀ हम लोग का सेटअप कर रहे हैं, हाँ बहुत अच्छी चली। पहले दिन उस दिन जीरो भी रहा, नेक्स्ट डे ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। okay, well, no problem, well, like because I will test this over a few hours over 8, not a problem. Playback the way to see perfect kar sakte ho exact numbers. So my strategy now is custom and I'm doing a playback 137, so it should pick me up right here. The nalla no pick hona chahiye। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਨੇ 12 ਆ ਗਿਆ 125 ਆ ਗਿਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਚੈੱਕ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ 125 ਕੀਤੇ ਰਾਈਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲੈਕਚੁਏਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ 25 ਡਾਲਰ ਤੇ ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖੂੰਗੀ ਮੈਨੂੰ 25 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 120 वो दिक्कत आ रही है ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੌਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ठीक है, फिर आइए फिर ATM ना करो जी। ठीक है और वो जो ग्रीन और ब्लू जो वो आए हैं ये क्या चीज़ है? क्या चीज ये बॉक्सेस? हाँ ये boxes आते हैं कि some orders are sitting in there, price may go in there, may और ग्रीन वही चीज़ है कि यहाँ पर भी ऑर्डर बैठे हुए हैं और यहाँ हैं। ये बॉक्सेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, 30-20 में जो आते हैं ना तो स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इट्स लाइक ए मैग्नेट के उसके अंदर जा सकते हैं बॉक्स के अंदर। उसके बाद डबल टॉप और डबल बॉटम हाँ, डबल बॉटम ये होता है कि निचली पीक और ऊपर वाली पीक सेम है, सेम आ गई तो फिर मार्केट ब्रेकआउट करेगी किसी इधर डायरेक्शन में निकल जाएगी। ईदर डायरेक्शन हाँ हाँ, ये तो नहीं हो सकता है वो डबल टॉप भी क्रॉस कर जाए तो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो डबल टॉप भी आपकी डाइवर्जन के लिए भी होती है, स्ट्रेंथ को देखना होता है ना कि स्ट्रेंथ भी डबल टॉप या डबल बॉटम है कि नहीं। तो स्ट्रेंथ वो सिर्फ आपको अगर हायर हाई ना लगाए और उसने सेम प्राइस बना दिया तो अब देखिए एक सेकेंड आई शुड order got filled, so this is not working, so we have to I will play with it कि इसकी आपकी ATM जो है 8 में कैसे चलानी है जी। YouTube पे पड़े हैं, it's just a matter रख के उसको देखना है और पीछे प्ले कर करके देखना है क्योंकि 7 में वो 0 ही रहता है तो द प्रॉफिट है कि वैल्यू है, यहाँ पर मेरा ख्याल है वो 1 हो जाता है तो दैट्स अ प्रॉब्लम। हाँ जी क्योंकि क्योंकि पहले दिन जीरो में बहुत नहीं चलेगा। नहीं but it shouldn't go from 0 to 1, right? So ऑल टाइम होता है जैसे ओके प्रेस करते हैं ऐसे में से हिट ओके 1 हो जाता है और डे फॉर यस्टरडे बाकी बात वेरी स्लो हाँ जी हाँ जी, बहुत स्लो सी जो वजह से लेकिन अपनी जितनी स्ट्रैटेजीज है ना वो टेस्ट करो प्री प्ले डेटा पे बार के जस्ट तुसी बैक जाके ऑन ऑफ कर दो या लाइट ऑन करना। हाँ जी जैसे हम ग्रीन में राइट बाइंग की चल रही है हाँ जी, बाइंग की चीज़ we don't know कि वो मार्केट आगे सेल में जाएगी कि बाय हाँ राइट जी we are following according to the large triggers Yes. and small triggers too वो अगर एक river में जा रहा है सारा अगर वो पिंक में भी हो रही है large and small हाँ, triggers देखिए जनरली होता ये है कि अब फॉर एग्जांपल एक मार्केट गई 18 पॉइंट ऊपर, ठीक है, इधर भी ओवर बॉट हो रही है, ठीक है, तो चांसेस ऑफ दिस मिड बैंड हिटिंग आर रियली 50-50 क्योंकि इट हैज़ गॉन सो मच ओवर बॉट हियर। तो मैं ये कहता हूँ कि आपका मिड बैंड का रिस्क होता है जनरल ये होता है कि अगर एक तरफा 10 पॉइंट गई है ना और वहाँ से वापस आ रही है तो आप सेफ रहोगे। Anything after that your mid band may fail, but even अगर आप देखो overall हमारी mid band की success जो है वो for example यहाँ trend change हुआ, divergent की line भी लगी, आपने यहाँ से 2-3 पॉइंट उठाए, पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर गए। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि मार्केट 10 पॉइंट एक तरफ चल के वहाँ से रिवर्सल शुरू हुआ है ना, या मिड बैंड पास हुआ है, मिड बैंड दूसरा वाला पास हुआ है,
मिड बैंड तीसरा वाला पास हुआ है. सो पास का ये मतलब होता है कि लाइक इट डिडंट ब्रेक इन एंड गो बैक टू ट्रेंड चेंज. लाइक अब यहाँ से यहाँ तक 18 पॉइंट था. आई वुड नॉट टेक इवन दो दिस इज पास. अब मुझे अब तो पास लग गया है क्योंकि पास हो गया है. मैं उस वक्त ये ट्रेड ना लेता. लाइव मार्केट में बैठा हुआ मैं ट्रेड ना लेता. बिकॉज आई नो कि यार 18 पॉइंट ये चढ़ी है. अच्छा 10 ये चढ़ी. 10 प्लस 18 28. 28 में से 6 माइनस उसने वापस कर दिए. फिर भी वन वे डायरेक्शन टू मच है. उसके बाद भी वो चलती ही गई. देखो ये भी पास हुआ, ये भी पास हुआ. भाई when you are up 20 plus 22 plus 15, your midbands are not there to pass every time, right? So generally अगर मार्केट 10 पॉइंट के बाद रिवर्सल ले रही है तो पास हो जाएगा. पास के मिड बैंड विल वर्क. सिर्फ आप इस नंबर को देखते रहो ना कि ये कितना ऊपर जा चुकी है. ये 22 पॉइंट ऊपर गई है. आई एम गोना टेक दिस रिस्क और नॉट, राइट? तो आप कहोगे यार यहाँ पर मैं ओवरबॉट ओवरसोल्ड वाला ले लेता हूँ. तो आपके पास दो ट्रेड चल रहे हैं ना साइमल्टेनियसली. ट्रेंड ट्रेड भी चल रहा है, ओवरबॉट भी चल रहा है, ट्रेंड ट्रेड भी चल रहा है. So you have to just pick which one would you like to die with. Pick your और अगर हम poison. ट्रेंड ट्रेड ले लेते हैं यहाँ पे, ट्रेंड ट्रेड फिर यहाँ से लेना है. इसको मतलब बिग बैंक से ले लिया. हाँ जी. that's it. तो ट्रेंड ट्रेड मिड बैंड से लेना है. ओवरबॉट ओवरसोल्ड 100 से लेना है. 100 और 0 से, 100 और 0 से. अगर 100 के पास भी पहुंच जाए तभी नहीं नहीं होगा ये कि वो ट्रेल करेंगी ना, फिर आप फंस सकते हैं ना उसमें. 100 पे जब 100 पे गई है ना तो मैंने लोगों का नुकसान नहीं देखा. ठीक है सर. अगर ये डाइवर्जन रखती है हाँ जी. तो डाइवर्जन करने के बाद जब ट्रेंड चेंज होता है तभी हमें हिट करना है कि उससे पहले? उससे पहले करेंगे तो हमें कंफर्म नहीं होता ना. तो अब ये देखें यहाँ पर डाइवर्जन की तो अब लाइन भी लग जाती है ना. ये डाइवर्जन लगी. अब ये लगी डाइवर्जन टू द डाउन साइड. मीनिंग फॉर एग्जांपल ये नंबर और ये नंबर, ठीक है, इसने लाइन भी खींच दी कि भाई ये अगर ये नंबर था तो नीचे है. लेकिन वो आई, लेकिन उसने आके चेंज नहीं किया उसकी. तो अगर आप यहाँ पर ही एंटर हो जाते हैं तो फिर आपका लॉस शुरू हो जाता है ना, क्योंकि डाइवर्जन कंफर्म नहीं हुई. इसलिए मैं कहता हूँ कि जब तक ये कलर मिड बैंड का चेंज ना हो तो आप ना घुसें डाइवर्जन ट्रेंड. ट्रेंड को चेंज हो लेने दें और 15-10 की डाइवर्जन पे ना जाएं. 30-20 की डाइवर्जन पे जाएं. आपका 30-20 की डाइवर्जन ज़्यादा पॉइंट दें. सर 30-20 के डाइवर्जन जो है वो लाइन नहीं खींचती है ना? नहीं आप खींच सकते हैं. यू कैन राइट क्लिक राइट हियर. आप कैन लोड कर सकते हैं टेम्पलेट्स एंड इट्स कॉल्ड मैक्स ट्रेंड 1. सर मैं दोबारा ठीक है. 30-20 पे जाएं. राइट क्लिक करें, टेम्पलेट्स क्लिक एंड टेम्पलेट्स लोड. इस पे लिख दें ट्रेंड 1 और लोड कर दें. तो वो लोड करने के बाद आपको बता देगा. अभी आप देखेंगे इसकी भी लुक वही वाली हो जाएगी. कहीं दे नीचे 30-20 पे जाके राइट क्लिक करके टेम्पलेट लोड टेम्पलेट्स फिर ट्रेंड ट्रेंड 1. ट्रेंड 1 ना फिर लोड. ठीक, थैंक यू. ये देखिए, ये देखिए ठीक. लाइन खींच के ना. गैप ट्रेड. गैप ट्रेड इज वेरी सिमिलर टू ट्रेंड ट्रेड. आप मिड बैंड से एंटर ले रहे हो और 15-10 से ही लेना है, ठीक है. उसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको लंबे पैसे बन जाएंगे क्योंकि ज़ीरो लाइन पे टच नहीं करेगी. लेट मी लुक फॉर अ गैप ट्रेड. राइट हियर. ये देखिए मिड बैंड के करीब आई. ज़ीरो लाइन से कितनी दूर है, काफ़ी गैप है ना. तो अगेन ये दोनों जब आप मिड बैंड से बाय कर रहे हो ना तो वो गैप ट्रेड खुद ही बन जाता है. तो इट्स नॉट समथिंग कि आप उसके लिए प्लान करते हो. तो अगर ये गैप ट्रेड में शो हो रहा है कि मिड बैंड के पास चलेगी. हाँ हाँ तो आप ले लो, बाय कर लो, तो buy कर लो. बाय कर लो यहाँ से, क्योंकि आपको पता है कि अभी तो बहुत लंबा पड़ा है.
और जनरली आप यहाँ से भी बाय कर सकते हो क्योंकि आपको पता है। अब यहाँ देखें ये डाइवर्जन की लाइन तो लगी कि ट्रेंड may change, it came down but it never broke the trend। तो डाइवर्जन ट्रेड में आपको ट्रेंड चेंज होने की कंफर्मेशन चाहिए। और दोबारा अभिषेक आप इसको सुन लें कि 30-20 में अगर आपने ये डाइवर्जन की लाइन देखनी है तो राइट क्लिक करें, इधर ये लिखा है टेम्पलेट्स और लिखा है लोड, और यहाँ मैक्स ट्रेंड 1 कर लें। एक और बात है, आप ये ना कंफ्यूज होइएगा, नाउ इट विल से 15-10 और 30-20, डोंट गेट कंफ्यूज, स्टिल ए 30-20 चार्ट, लेकिन इसमें 15-10 की डाइवर्जन की लाइन डाली हुई है, तो डोंट वरी, यू विल से बोथ 15-10 एंड 30-20। तो 20 के ऊपर जाके हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करना है और लोड टेम्पलेट करेंगे तो ये डाइवर्जन की, अब ये डाइवर्जन लगी, लाइन लग गई कि ये हायर हाई हायर हाई, अब यहाँ से एंटर करें, 19 पॉइंट की है, बेहतरीन डाइवर्जन है। तो मेरा क्या था कि साइज को थोड़ा बड़ा करना हो तो ये देखें, ये नीचे जो है ना, नीचे जो टाइम चल रहा है, होल्ड इट एंड ये देखें, सिर्फ होल्ड इट दिस वे एंड इट विल मेक इट दिस वे। इफ यू वांना गो hold it this way, you just hold this price। ऐसे नैस्डैक में एज अ रेफरेंस देखो तो नहीं होगा कितना मिलना है। No, that's the sir, ਇੱਥੇ plus ਕਰੋ, ਇਹ 30-20, ਇਹ ਥੱਲੇ plus ਲਿਖਿਆ, ओके ਇਹ plus ਲਿਖਿਆ, हाँ जी ਇਹਨੂੰ plus ਕਰਕੇ instruments choose ਕਰ ਲਓ, NQ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ template ਲੈ ਲਓ max trend 1। What I normally do, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 30-20 ਦੇ ਚਾਰਟਸ ਦੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ data series, ਠੀਕ ਹੈ। Let me even I can do it, so 30-20, what I will do is, let me see if I can save it as a template, properties, so just follow this, all of like the last Renko 1, 20, 30 and everything. Once you have taken a picture of all of this, you want to make sure you add another chart, plus, and I will go Nasdaq NQ, and I will go max 30-20. Now you should have the price of, but you have to then go back and just match the values। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसे मैं लेना स्क्रीन पे बस खोल के रख लिया। हाँ हाँ no problem, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਗਏ and then go in the new chart and just pick a template, NQ, and then put the values ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਾਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਣਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੀ values ਪਾ ਦਿਓ, and then pick a template, let's say trend 1, 30-20, 15-10, just as long as ਤੁਹਾਡੇ bars ਹੋਣ and everything else is the same। Let's say I'll do 1500 bars। It copied everything, just copy, same settings कर लेना उस बार। बस पहले से इसको कॉपी हाँ सिर्फ वो मतलब इन्हें ए भी कर लिया, ए भी ला ली, every possible indicator लाते हैं, you just wanna pick only limited stuff। पहले फोटो स्क्रीन पे था ओके कोई भी चार्ट खोल लो ना, let's say ਤੁਸੀਂ 30-20 ਦਾ ਚਾर्ट ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਣਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, I will close this। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰਾ 30-20 ਦਾ ਚਾर्ट ਹੈ ES ਦਾ, ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, मैं गया डेटा सीरीज, I'll just make a copy of this, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਚਾर्ट ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, सेम वैल्यूज ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट हो। मैं वैल्यूज अपन के अपना इंडिकेटर पा रहे हैं वो भी नहीं इंडिकेटर नहीं, सिर्फ वैल्यूज पा रहे हैं कि ਕਿਹੜੇ इंडिकेटर्स मैं लेके आऊँगा नवे ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ 1000 ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ 5000 ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ
ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਡੇਟਾ ਸੀਰੀਜ਼ राइट क्लिक कितना है? ਰਾਈਟ ਕਲਿਕ ਡੇਟਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਾਰਸ ਟੂ ਲੋਡ ओके 1000 2000 5000 10000 just to go back and play for 30 20 1500 bars are more than enough तो 1500 करूँगा so you will have more time you can go back it's gonna say loading and it will then calculate everything ਹੁਣ देखो मैं like I can go back 30 20 ਦੇ 1500 बार बहुत बार ਹੁੰਦੇ ਨੇ एक सर लास्ट टाइम भी मुझे ये जूम करना है जूम मतलब मेरे कहने कभी कभी जो आपको पिंच करके जूम करना स्क्रीन को हाँ जी हाउ टू डू दैट ਇਹ ਦੇਖੋ मैं ਇੱਥੇ ਪੜੂੰਗਾ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ੂਮ ਹੋ ਗਈ यदि बाहर में पकड़ के और क्लिक करके ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ टाइम नहीं ਥੱਲੇ ਟਾइम ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ੂਮ ਇਸ ਪਰ क्रिएट वर्टिकल but then click on F to become the latest right but generally like all the charts we've put them on pretty reasonable size ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ already ਕਿ you don't have to worry about ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 26500 ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 26500 27500 ਕਰਾਂਗੇ 1000 ਹੋਰ ਕਰ 1500 ਹੋਰ ਕਰ छब्बीस 500 1500 हो गए ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਾਉਂਡ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਹੋਰ ਪਾਉਣੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ 1500 2500 ਨਹੀਂ ਟੋਟਲ 2500 ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ 26500 ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਲੈਵਲ 2 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ 27500 ਹੋ ਗਿਆ ਯੈਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਮੇਰੀ 20 ਨਹੀਂ 27 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 50 ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ 2500 ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ 26500 ਤੋਂ 1000 ਪਾਓ 27500 ਤੁਸੀਂ 28000 ਕਰਤਾ 500 ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਸਹੀ ਨੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਹੀ 500 ਤੱਕ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ 2500 2500 ਦਾ 2500 ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2500 ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਹੈ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ये पहले पैकेज था 25000 का ਪਹਿਲੇ ਪੈਕੇਜ 25000 एक बार फिर रिपीट करो तो 25000 ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ 1 ਹੈ ਕਿ 25000 ਨੂੰ ਲਾਓ 26500 ਕਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ 7 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਉਂਡ 2 ਆਏਗਾ ਭਾਵੇਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿਓ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 25 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ just go on Apex funding ਮੈਂ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ I should actually play this for everybody Apex funding actually ਇਹਨਾਂ ਦਾ full YouTube ਹੀ subscribe ਕਰ ਲਓ I will go on youtube.com just type in Apex funding how PA works it's called performance account how P PA converting to a PA account इसकी आवाज़ मैक्स है प्रोजेक्टर हाँ ऊंची करनी फुल कर ऐप पूरा दस सकता है कि ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਫਿਗ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ 7 ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁਣ 10 ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ हाँ जी ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਲੈਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਉਹ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਂਟ ਕੈਂਸਲ ਯੂਰ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ until your performance account is set up so that's important so 10
देखो पहले ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰਨੇ ਨਾ 1500 ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ Today, morning 11th day, we'll get the system to for 10 days, and ਓਕੇ ਕੈਰੀਅਰ 1500 ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਡੂ ਨਾਟ ਕੀਪ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਔਨ ਯੂਰ evaluation ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਯੂ نو ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਓਵਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁਣ 1500 ਮਸਲਾ ਫॉर एग्जांपल आई एम $244 अवे फ्रॉम 26500 मैं हूँ आहिस्ता आहिस्ता 100 करके पूरा कर लूँगा मैं आई डोंट लालच नहीं करनी कि मैं ऐ नहीं वो कहते ना सानू 1500 करके दिखा दिओ असी ਉਹਦੇ 10,000 नहीं देखने like you know just go slow and go slow and go slow ਤੇ 1500 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ 1550 ਹੋ ਗਏ नहीं 1600 कर दो 1700 कर दो ऐ ना वरी करो कि I'm gonna go and go crazy about all of this ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਓ everything is done so yeah if you guys want to take a break grab a coffee no problem ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਪੈਕਸ ਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ATM ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ATM ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਸਿਮਿਟ ਵੈਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ 200 ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂ। 200 ਵਾਟ ਵਾਰ ਬਣ ਗਏ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ 200 ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਗਰ 150 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ 200 ਤੇ ਚੜਨ ਦਿਓ ਦੇਖੋ 150 ਤੋਂ 150 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ $50 ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ 210 ਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ no problem. ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੈਟਸ ਸੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਨੀਚੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 87 ਤੇ ਆ ਗਿਆ 212 then you will lose that ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰੋ minus 87 ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ATM ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 27000 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ 26000 ਨਹੀਂ ਆਲਮੋਸਟ $2500 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗਵਾਇਆ 26500 plus 1000 27500 ਤੇ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1000 ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਉਹ ਕਰਨਾ 1000 ਯੈਸ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 1000 ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਈ ਬਲੀਵ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨ ਪਹਿਲੇ $2500 ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ 26500 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2500 ਕਮਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਡਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਮਤਲਬ 26500 ਦਾ ਜੋ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੇਰੇ 25000 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 27500 ਕਰਾਣਾ 27500 ਕਰੋ 27500 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਯੂ نو ਜਸਟ ਬਸ ਉਹ 2500 ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ 2500 ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 3000 ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ 500 ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਰ ਵਿਡਰਾਅ ਦਾ ਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਹਾਂ। ਯੂਐਸ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਵਾਈਸ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਇਹ ਤੇ ਲੌਂਗ ਜਰਨੀ ਸੀ no trust me it's not that far ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਡ ਅਕਾਊਂਟ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਨਾ that's shame on me ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 20 ਅਕਾਊਂਟਸ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿ it's ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਟੇਟਸ ਤੇ 20 ਅਕਾਊਂਟਸ हाँ मैं कल मैं बार पा रहा है लाइक आई गो लाइक ऑन ऑल क्योंकि देखो आई हैव टू लीड बाय एग्जांपल राइट देखिए अगर मैं हालांकि मैं तो नैस्डैक करता है बिकॉज आई नो नैस्डैक आई कैन हैंडल नैस्डैक राइट oh no problem ਅਗਰ ਦੋ ਦਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਤਾ ਹੈ ਆਈ ਮਾਈ ਵਾਈਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਈਸ एवरीथिंग यू नो yes I am here next Saturday as well approximately again 1 o'clock ਇਹ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਏਗਾ नहीं ईयर का फर्क करना ना कई की ट्रांजैक्शन 24 के पास फर्क करना है ਮੇਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀ ਕੋਲ ਰਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ अच्छा क्वार्टरली कर दो
और सर आपका सही जा रहा है? ठीक जा रहा है। एपेक्स में शुरू किया थोड़ा सा? मैं सिम अकाउंट पे तो पैसे बना रहा हूँ, अच्छा, अपने अकाउंट पे भी बना रहा हूँ, बना रहे GFF के साथ है। ठीक है। तो लेकिन अभी बहुत सॉफ्टवेयर स्लो जा रहा नहीं नहीं ठीक है, स्लो इज ओके, लेकिन एज लॉन्ग एज आपकी डायरेक्शन ठीक हो, डायरेक्शन जब मैंने शुरू किया था ना सॉफ्टवेयर पे बाय किया पहले, मैं $400-500 का एकदम मैक्स में गया अपने, उसके बाद हम स्टोर से फिर माइक्रो में आ गए। ठीक है। लेकिन आपने वहाँ क्या गलतियाँ की? मुझे बहुत सॉफ्टवेयर का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, ठीक है, मुझे ओवर बार ये का नहीं पता था, एंट्री पॉइंट्स कहाँ से लेने, अब काफ़ी चीज़ें पता चल गई। लेकिन अब डायरेक्शन ठीक जा रही है ना अब? अभी पिछले 5 दिनों से एवरी डे तकरीबन $500-600 का प्लस में प्लस आ रहा है, कंसिडरेशन। ठीक है, क्योंकि वही चीज़ अपने आप अकाउंट पे भी $14-15-20 में बन रहे हैं, ठीक है। अभी भी फिर थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन अब उसी जगह अपने रियल पैसों की जगह एपेक्स आ जाए ना, मैं एपेक्स में आऊँगा अभी, क्योंकि एपेक्स में सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वो डिसिप्लिन आपको सिखा देगा। और मैं ऑनेस्टली एपेक्स को इतना प्रमोट नहीं कर रहा था। हमारा प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये होता है कि 14 दिन ट्रायल करो, उसके बाद 1 माह डेमो करो और फिर GFF पे जाओ, ठीक है। अब हमने GFF पे जाने के लिए निंजा ले लेते हैं $100, ठीक है, और मिशेल भी $11 ले लेती। 111 मुझे देने, उनको देने हैं US, 339 आपने मुझे देने हैं, 500 की फटीक पड़ जाती है ना। हालांकि ये इतना ज़्यादा महंगा नहीं है कंपेयर टू अदर, लेकिन अब एपेक्स बढ़नी है आपको $33 की, $20 की, चलो 70 की भी पड़ी ना। अगर मैं जब एपेक्स का अकाउंट लूँगा हाँ, तो मेरा GFF का अकाउंट चलता रहेगा साथ साथ? नहीं, वो GFF का लाइव के लिए वो $100 जरूर लेते हैं ये। लेकिन अब पास कर दो, इसको पास कर दो, यहाँ ये वाला रूट ले लो, उनसे कहो यार मैं अभी लाइव ट्रेडिंग नहीं कर रहा, मैं एपेक्स पे कर रहा हूँ, मैं 11 भी ना दो, क्योंकि डेटा मुफ्त में आ रहा है एपेक्स में। अच्छा, इसका एग्जाम पास कर लो, $33, आपकी क्या फीस पड़ेगी? $339 एक, और ये $40 इसके। आप इसको पास कर ही जाओ यार, आप अपने किसी और के पैसों से आपका रॉक सॉलिड। पिछले 5-6 दिनों से ना मुझे तकरीबन आधे महीने से ज़्यादा हो गया, पिछले 5-6 दिनों से मेरी ट्रेड चल रही है। नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता अन्यवादी ट्रेड डालना ऐसे ही है, बस उससे कह रहे हैं कि हार्ड सोचना ट्रेड नहीं चाहिए। आपको ट्रेड, आप मैंने यही कहा ना, इस ट्रेडिंग में गैम्बलिंग नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर ट्रेड डाल रहा हूँ तो मेरा 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मैं $15 से ज़्यादा लॉस लेना ही नहीं है। तो ट्रेड अगर मैं ओवर बॉट ओवर सोल्ड ले रहा हूँ तो 100 पे आए और 0 पे आए और मैंने 2 पॉइंट लेके निकलना है। ये डाइवर्जेंट का वेट करें और दैट्स इट। यही 2-3 तरह के आप ट्रेड चलाते जाए तो आपके जैसे ही है, अब जिस तरह टाइम गुजर रहा है ना, अब चीज़ों पे हैंग आ रहा है, यस उसको ये बन रही है। मेरा सेम कैसेट सेम लेक्चर रोज ही चलता है। आपने तो वो जो एपेक्स की है, हाँ जी, मतलब निंजा पे इंपोर्ट करते हैं, हाँ जी, तो उसकी वजह से GFF साथ क्यों लेकिन नहीं trade कर सकते हैं? कर उसकी सकते हैं, वजह लेकिन से- वो जो $100 पर मंथ है ना, हाँ। वो देना ज़रूरी होता है अगर आपने लाइव ट्रेड करना है। वो की वो की अलाउ नहीं करती, फ्री का डेटा, फ्री का GFF। ये दोनों तो पे मीडिया पर दोनों ने ट्रेडिंग हाँ हाँ, अगर उन्होंने भी 100 दे दियो तो GFF भी करो एंड दैट्स इट। अगर आपको काम आ जाता है तो पैसे तो कुछ भी नहीं और है। सर मैं आपको ये बताऊं, वो दूसरा ऑफिस है, मुझे वेंसडे को वहाँ लेक्चर देना पड़ा। पीपल weren't paying, रोज़ के $800-900 रियल में कमाते हैं लोग। और फिर मैं कोई ऐसा, और मैं बल्कि आप मुझे अगर कभी लेक्चर में सुनो, एक भाईजान को तो मैं डांट देता हूँ, क्योंकि वो सुबह आए 9:30 पे 9:38 तक 250 उन्होंने वेंसडे को कमा लिया था। मैं उनको बेग किया कि गो फॉर अ वॉक, एंड देन ही वेंट फॉर अ वॉक। फिर लेकिन मैं वापस आया तो 2 बजे तक ना वो -400 में थे। क्या हुआ जी? बस जी वो मर्जी ट्रेड लग गया, राइट। सो आपका हाथ फिर उस पर डिसिप्लिन नहीं मैं सिखा सकता यार, सॉरी। एपेक्स जो है ना रेट को कंट्रोल करना सिखा रहा है। ओ आपको पोजीशन ट्रेडर से निकल जाएंगे सारे पोजीशन ट्रेडर लाइक माई सेल्फ। 4 बजे के बाद आपको ट्रेड बंद करना है जी, कोई ऐसा नहीं है कि 4 के बाद आपने ट्रेड नहीं बंद करना। सर ट्यूसडे और वेडनेसडे को ही दस रही थी, मिस हो गए सुनना, तो ये ट्रेड बताया तो तुम कुछ कह रही थी एपेक्स का दस रही थी 329 एंड नहीं नॉट 329 सुपर एरिया था, एंड देन यू आर सेइंग 150। देखो की कह रही थी
ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਨਾ ਓਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ $7,000 ਅਪ ਫਰੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਥਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ $150 ਉੱਥੇ ਸੁਪਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ 7,000 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਾਈ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਹੈ $300 ਡਬਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਸੁਣਦੇ ਹੋ $7,000 ਪਲੱਸ HST ਪੇ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰੋਗੇ 150 ਪਲੱਸ HST ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ $7,000 ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਥਲੀ ਫੀ 150 ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਟਸ ਦੈਟਸ ਆਲ like but a lot of people that they come in this subscription model they don't want to spend $7,000 right they said man I'll just rather pay you double and that's it so ये मतलब फर्क जो तो 25 देना फिर 150 नहीं देना पड़ेगा है जो तो 25 देना 25,000 for life तो खत्म हो जाएगा तो लेकिन वो फिर 150 भी नहीं देना पड़ेगा है no नहीं देना पड़ेगा मेरा सब तो एक्सपेंसिव पैकेज होते हैं $25,000 इधर सर औसत वगैरह शुरू कर लो ना जो 300 ले रहे हो ਜਦੋਂ 4800 ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮੇਕ ਕਰਦਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਅਪਫਰੰਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ 4800 ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ 4800 ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ 5,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਚਲੋ 5 ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ 150 ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਾਈਟ ਸੇ ਬਟ idea is day one ਦਾ it's $10 a day ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਾਸਟ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੜੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ I have 25 seats over there right we would like to get at least $10,000 a month reason ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ at least 50% will be a new student who has to sit there every month ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ $7,000 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਨੰਬਰ 2 then I have 800 customers or more who are actively paying right ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ $150 ਲੈਣਾ ਹੈ per month right so just making it a little bit ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੇ 500 ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹ ਗੋਲਡ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 500 ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਦਿਨ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ $500 ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੋल्ड ਤੇ $5,000 अकाउंट पे और कुछ भी नहीं है अकाउंट में 5,000 से ऊपर जाते ही नहीं है जितना है विड्रॉ कर ही जाते हैं लेट्स से कि उनके पास उनको ट्रेडिंग आ गई है ट्रेडिंग वो बड़े ध्यान से ट्रेड करते हैं 5,000 का $500 का डेली टारगेट होता है उनका 500 के बाद वो बंद कर देते हैं कंप्यूटर राइट डाइवर्जेंट ट्रेड करें ओवरबॉट ओवरसोल्ड करें एवरेज उनकी 500 निकल रही है तो 5 का महीने हफ्ते का 2,000 निकाल लिया महीने का 8,000 निकाल लिया वो अलग से 5,000 से शुरू हुआ था वो 10 हुआ फिर 5 वापस ले लिया फिर वो 5 पे शुरू हो जाते हैं तो he has a good habit of withdrawing right and then I asked them hey pay $1,000 Canadian to us to sit down here but he doesn't have to do any you know ऑफिस में आने की ज़रूरत ही नहीं है मैं सिर्फ ये 2 दिन नहीं कर पाया क्योंकि खांसी बहुत थी लेकिन जनरली आई डोंट हैव एनी इशू टू गो एंड सिट क्योंकि अब मैं साथ साथ भी तो ट्रेड कर रहा हूँ ना मैंने बल्कि आपको अपना भी एपेक्स अभी दिखा देता हूँ कि let me go disconnect my and rough is apex YouTube पे ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊ ਟੂ ਸੈਟ ਅਪ ਪੀਏ ਅਕਾਊਂਟ नहीं नहीं हाँ एग्जैक्टली एपेक्स का एग्जैक्टली 1 मिनट लाइट बंद करी ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ 20 accounts I bought it right दो मेरे गलते थे ट्रेडो वेट हो गए सी but I like rhythmic better than some people like rhythmic some don't my one account is $244 behind I have this I paid ये $700 का टूल है लेकिन मैंने इसको 150 में लिया था बड़ा अरसा पहले
This is called Apex Trade Copier. So what this is such a beautiful, मैं ਤੁਹਾਡੇ हालांकि because I don't have time, I don't constantly sit, I trade Nasdaq. एक बारी ਤੁਹਾਨੂੰ Nasdaq एक concept समझ आ गया ना, you'll be in and out in 5 minutes. On it's 5 मिनट ਦੀ job है $100 करना, total 5 मिनट चाहिए. Nasdaq overbought 100 ते हो जाए, इतनी तेज चलती है Nasdaq, इतनी चेल्स कि आप ब्लिंक बनाए $200 बनाते हो. नहीं आप कर लोगे, कोई मसला नहीं है. पहले माइक्रो Nasdaq पे जाइएगा, $2 का एक पॉइंट होता है लेकिन जल्दी आ जाता है. मैं क्या करता हूँ, Nasdaq क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा लीडर अकाउंट सिम हो, एंड देन आई विल गो एंड से इसको भी कॉपी कर दो, इसको भी कॉपी इसको. तो आई एम नॉट इंडोर्सिंग ग्रुप ट्रेडिंग. ये GFF जक्की का है, ये GFF अता का है, ये GFF आपका है. यहाँ पर सारे GFF के यूज़र नेम डाल दें और आप कहो कि जो राफे ट्रेड ले वो सारे ट्रेड हर तरफ चले जाएं. तो मैं इन सारों पे ग्रीन कर दिया. दिस इज़ कॉल्ड ट्रेड रेप्लिकेशन. तो फॉर एग्जांपल आई विल गो हेयर, या मैंने सारे ग्रीन कर दिए. अब मैं मेहनत एक पे करूँगा. अब एग्जांपल देखिए कि मैंने क्या गेम प्लान रखा हुआ है एपेक्स के अंदर भी. अब ये मेरे 20 के 20 इकट्ठे ग्रेजुएट हो जाएंगे, ठीक है. 20 के 20 इकट्ठे वैल्यूएशन से परफॉर्मेंस में चले जाएंगे. जब मैं एक में 500 कमाऊंगा तो 20 पे 500 कमाऊंगा. मेहनत तो एक पे की ना, कॉपी ट्रेड हो गया. और जब मैंने विदड्रॉ करने हैं तो मैं 500 नहीं $10,000 बनेगा मेरा. 20, लेकिन जाएंगे भी उसी तरह. जस्ट रिमेंबर इट, इफ इट गोज अगेंस्ट यू, सो यू हैव टू नो कि दिस विल गो अगेंस्ट यू और विद यू, राइट. और इसमें मैं गया एंड देन इफ आई हिट, मैं अपने सिम अकाउंट पे जब मैं कोई ट्रेड डालूंगा यहाँ तो सारे 20 के 20 हो जाएंगे. और आप मेरी फ़ोटो भी देख सकते हैं, वीडियो भी बनाई है मैंने स्टेटस पे. एक पे ट्रेड डालता हूँ 20 कॉपी हो जाते हैं, और एक पे क्लोज करता हूँ 20 के 20 क्लोज हो जाते हैं. तो द बेनिफिट ऑफ दिस इज़, जब आपने मेहनत ही करनी है तो आप अच्छी मेहनत एक बच्चे पे कर लो, बाकी सारे पल जाएंगे खुद ही, राइट. सो so that's why I'm saying, अब कुछ मैंने ज़रा लेट शुरू किए, कुछ में Nasdaq किया, कुछ में माइक्रो किया. ये अकाउंट भी, ये 2 अकाउंट तो इंशाल्लाह सुबह तक निकल जाएंगे, राइट. बाकी मैं आहिस्ता आहिस्ता करते करते, ये मेरा अभी 26,000 से काफ़ी दूर है ये ऑलमोस्ट. लेकिन सारे कोई भी फेल नहीं हो रहा इसमें. यू कैन गो, आई कैन शो यू राइट हियर लाइक माई नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड्स, बिकॉज अगेन आई वांट लीड बाय एग्जांपल, राइट. कि भाई मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही कर रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ा कुछ और रहा हूँ और कर कुछ और रहा हूँ. सो ओपन माई रिदमिक, इसके वन यूजर, ये सारे मेरे हैं. मेरे सारे स्टेटस ठीक हैं, मेरा कोई अकाउंट नहीं ख़राब हुआ, सब कुछ सही है. फिर आप जाओ, इसका लिखा हुआ है, आप लिखा है परफॉर्मेंस. नहीं, परफॉर्मेंस कैसी है जी. तो आज तो कोई ट्रेड नहीं है, बट यू कैन गो, आई बिलीव हिस्टोरिकली इट डजंट शो एनीथिंग, बट ये मेरा थ्रेशोल्ड 7 बता रहा है, वो भी ऊपर आता जाता है. सो होपफुली बाय ट्यूसडे और वेंसडे आई शुड ग्रेजुएट और मेरे 20 के 20 अकाउंट ठीक हो जाएंगे. आई मे नॉट डू, मैं फिर 5 का बैच उठा लूँगा कि एक पे 5 कॉपी कर लूँगा ट्रेड, जब मेरे सारे परफॉर्मेंस अकाउंट अपने हिसाब से करूँगा ना कि एक पे करना है. क्योंकि अगेन वहाँ से मैं स्लिप हुआ तो मुझे दोबारा नीचे आके पास करना है, ऊपर आना है. तो मैं 20 ग्रेजुएट कर लूँ, लेकिन उनको तैयार से रखूँ, नो प्रॉब्लम. के अगर हम लोग जैसे लगा रहे हैं, ट्रेड लगा रहे हैं और लिखते जाएं कि हमने आज 17 ट्रेड लगाए, 17 में से अगर 12 अच्छे निकले, हाँ. तो ऐसे एवरेज निकालने में 3-4 पेज 4-5 के अच्छे निकल रहे हैं, तो फिर हमें लाइफ पे आ जाना चाहिए ना. आपको लाइफ पे उस वक्त आ जाना चाहिए द मोमेंट यू कैन ईजीली मेक $200 a day ईजीली. पावर चाहिए. 7 or 8 more days, फिर उसके बाद जाना. मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली 99% पे से भी ज़्यादा, अगर सिर्फ 1% जो कामयाब होंगे ना, या 2% है. सो मच डिसिप्लिन. मैं अभी तक सिर्फ 1, 2 या 3 बंदों को जानता हूँ जो अभी उससे स्लिप नहीं होते. लैपटॉप बंद कर देते हैं, वो कहते हैं दफ़ा करो यार इसको, क्योंकि ये 11 हो 12 हो, डाइवर्जन बाद में आती है. लेकिन
आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना ये सबसे मुश्किल काम है, रैदर देन और कुछ नहीं मारेगा आपको। मैं बताऊं, जब आपके ट्रेड भी अच्छे लगने लगेंगे, आप कॉन्फिडेंट भी होगा, फिर डिफरेंट यू में साइकोलॉजिकल इश्यूज आ जाएंगे कि आप कहेंगे थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। मैं अगेन मैं आपको यहाँ पर होपफुली इफ आई कैन मिरर कास्ट माय फोन, चलो अभी तो लाइव स्ट्रीम हो रहा है, ही रोट मी दिस, लेट मी सी इफ आई कैन डू इट हियर। इज माय व्हाट्सएप ओपन ऑन एनी लैपटॉप? I'll show you the conversation. This is a guy who went to college with me. मेरे साथ इकट्ठा पढ़ा है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, एंड आप उसकी कॉन्वर्सेशन सिर्फ पढ़ना। अपने आप को गालियाँ दे रहा था कि मैं $2250 प्लस था, और अगेन इसमें वो लगेगा वो कन्वर्टर लगाना पड़ेगा पढ़ा है और अंदर पड़ाना। तो आपने सेटअप अच्छा कर दिया यहाँ पे नहीं, इस तरह ज़रा इजी हो रहा है क्या? बोर्ड भी आपका फिक्स हो गया है यहाँ पे। इसमें थोड़ा होम पोल हो जाए ना, बोर्ड वाला अच्छा ये चलेगा? that's fine. HDMI ये so I can see What? This is an interesting conversation. बहुत, मैं उसको अपना बता रहा था और वो मुझे कहता है कि अब वो दुआ क्या मांग रहा है कि he trades, इसके बहुत performance accounts भी है, right? And I was just asking him what the hell did you do, and वो ये कह रहा है exactly I reached my 2200, उसका टारगेट देखो कितना है, वो कहता है मैं $2200 रोज कमाता हूँ। Then I said, let's do another one. So far minus 950. Like I said, my head is, and my girlfriend wants a conversation as well. like my head is like, वो कहता है मुझसे अभी बात ना करो क्योंकि 45 मिनट रह गए मेरी मार्केट बंद होने पे। So basically what he says again, and I told him that hey man, I just shut off my computer, so we talk, right? And then he said I got to 2200, why the f didn't I turn it off, right? Again it's a guy, professional trader है और $2200 कमा चुका है सुबह से बैठा हुआ है, and then he started, he's like why am I negative 19, ये मारेगा और कुछ नहीं मारेगा, right? And then वो फिर अब conversation में चला जाता है। Then he showed me his real performance account, उसने हाइड करके मैं इतना मेरे पास बन चुका है, विड्रॉ कर चुका हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि ES is going down in 30 minutes, कि अब भाई हमें क्या पता कि क्या जा रहा है। So anyway, long story short, क्योंकि कहता है कि मैं शॉर्ट बैठा हूँ 43-41 पे, यानी कि वहाँ वो बैठा हुआ था शॉर्ट के नीचे आएगी, और मैंने कहा 57 शॉर्ट बनता है, 42 तूने कहाँ से उठा लिया है, क्योंकि मैं डिफरेंट चार्ट देख रहा हूँ, वो डिफरेंट देख रहा है। मैंने कहा भाई हमारा ओवरबॉट तो 57 था, तो तुम 42 से कहाँ एंटर हुआ है। मैंने उसको यही कहा कि 43-57, मैंने कहा अगर नैस्डैक 15,000 पे आ गया, जो उस वक्त 15,200 पे, तब तेरे पास चांस है कि 43-35 पे आएगा। तो वो कहता है नैस्डैक इज वाइल्ड, वाइज वन लाइफ टाइम ट्रेडिंग एनीवे। सो अगेन हमारी जितने आपस में कॉन्वर्सेशन है ना, वो कॉन्वर्सेशन यही होती है कि you're gonna lose because of over trading, you're gonna lose कि जस्ट एक ट्रेड और डाल दें और भाई 500 हो गया, 200 हो गया, 100 हो गया, 20 हो गए, छोड़ दो यार, जो आपका डेली टारगेट है just do it and exit out। जो एपेक्स में भी माइक्रो वगैरह है, बिल्कुल है, लेकिन फ़ायदा है ना, आप रियल का करें। 1500 माइक्रो में कितनी देर लग जाएगी, तो एपेक्स तो रियल करें। ख़राब हो गया अकाउंट, $33 ही जाएंगे ना। तो देखिए जब डाइवर्जन लगे, आपको 25,000 वाला 4 मिनी दे रहा है, मैं वो भी एक में करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि अगर मेरा ख़राब हो गई है और मैं लेट्स से ओवरबॉट ओवर सोल्ड ख़राब हो गई, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 99 पे एंटर हुआ, मैं फिर मेरे पास अभी भी 4 एमिनेशन और पड़े हैं, मैं फिर एक यहाँ ले लूँगा,
एक और यहाँ ले लूँगा, 3 ले लिए तो वो जल्दी नीचे आ जाएगा ना। तो आप रेदर देन के फॉरेन एंटर हो, आप एवरेज करते जाओ स्लोली, आपको पता है कि आनी है आनी है आनी है। सो नो नॉट ए प्रॉब्लम। ये आती है थोड़ी देर के नीचे चली जाती है। मैं ये देखती हूँ कि अगर तो ज़्यादा ट्रेंड चल रहा बुलिश का, हाँ हाँ, तो ये थोड़ा सा नीचे जाएगी जरूर, लेकिन फिर ऊपर जाएगी, तो होता कैसा है ना। लेकिन 99 और 100 पे आपको श्योरिटी हो जाती है कि इसने गिरना ही गिरना है, राइट? तो आप उसको 100 पे एंटर कर लो और 100 के बाद आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे जी। सर जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी सिमुलेशन पे, हमारा हाथ बैठ जाएगा कि हाँ भाई ये हो रहा है, क्योंकि 2-3 दिन तो मेरे ये नया एटीएम पे टेस्टिंग पे लगे अब हैं। एटीएम बैक टेस्टिंग करें। हाँ जी, तो अब क्या है ना कि दोबारा फिर नॉर्मल पे जाएंगे और टेस्ट करेंगे। 1 हफ्ते बाद जब हम रेडी होंगे तो आपको कॉल करें कि हमने क्या करना है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे से तो आपका ताल्लुक, मेरा और आपका ताल्लुक सॉफ्टवेयर तक है। फिर क्या करना है। लाइव ट्रेड के लिए आप जकी कॉल कर लें, बिलाल कर लें, गुरदीप कर लें, वी कैन हेल्प यू गो ऑन द GFF लाइव। आई स्टिल सजेस्ट फॉर बोथ ऑफ यू गाइस टू टेक द एपेक्स राउट। We are already at apex. नहीं एपेक्स है ना, एग्जाम पास करें, सस्ते में ज़्यादा कमाए ना। मैं ये कह रहा हूँ अपने रियल डाल दिए ना अपने, GFM से तो जाने की जरूरत नहीं। जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमारा सिमुलेशन से हमने लाइव पे जाना है, हाँ। हमने सीधा लाइव कर दे, उसको कंप्लीट कर दे, बस यही करना है। दैट्स इट। देखिए उसमें नीचे एपेक्स लिखा है ना, हाँ जी, Count दो पे दो तो काउंट है ना, एक तो 50 एक पे सिम लिखा है और एक पे एपेक्स लिखा है। हाँ जी। तो आप एपेक्स का बटन दबाएंगे तो आप अच्छा उसमें भी ये फायदा है that you don't have to stress over it, क्योंकि अगर अकाउंट खराब होता है तो 30 दिन बाद वैसे रीसेट हो जाएगा आपके बैंक में। $100 आपकी क्या फीस गई, आपके 1 मंथ की वो चली गई आपके। इसीलिए लोग मल्टीपल अकाउंट खरीद लेते हैं कि एक खराब हुआ दूसरा कर लेंगे, दूसरा खराब हुआ महीने में 4 तो नहीं खराब होंगे ना यार। तो अगर ट्रेड कॉपियर नहीं भी यूज़ करना तो गुड आइडिया टू हैव ए मल्टीपल अकाउंट। ये देखिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। आई विल गो इनटू एपेक्स और यहाँ से जब मैं कनेक्ट हो जाऊँगा तो यहाँ ये देखिए आई कैन पिक एन अकाउंट कि मैं इस अकाउंट पे ट्रेड करना है, और मैं अब ट्रेड डालूंगा तो इस अकाउंट पे आ जाएगा।